Good morning. Don't know, one sec. Hello. Mic testing. Hello. Hello, good morning. Am I audible? Somebody please say yes. Hello. Morning, Bharat. Am I audible? Okay, great. Because my feedback was not coming. That is why. Let me set things up. Uh, Nifty 200 points down. So I don't know. Maybe this is some game that being played. It is not expected to be so much down, and crude is actually going down only. The other Brent is below 100. That was expected. Anyway, we will wait for. Let us set things up meanwhile. Mm. 90 high was 82, but why it is showing 92? Lock. Low was 24, 284. Okay.
You Nifty gift Nifty, I mean Nifty is as of now tracking gift Nifty 125 points, but I feel that whatever is the morning low, no, that is what will be the low for the day. That is my view. Okay, can be wrong again. Mm. Let me add our day chart and just before the market opens. Let us analyze that also. So it's saying ADX ranging, MACD bearish, yesterday closing, stochastic is only bullish. Okay. So in 5 minutes that was the case, but if you see the one day, I think it is ranging, even though it is ranging now, overall looks bullish. So it is yet to come into this multi, I can say this is almost a multi-year trend line. Hmm? The trend line is coming from 20 November 2020. Wow. We can in fact fine tune it to this. That is a channel. Hmm. How perfectly it has been maintained the channel. Huh? You can so beautifully see this is the bottom of the channel. It went exactly there in. I used to always wonder how does Nifty know all this. Okay, so exactly it went to 21,519 without breaking that long term channel. It has already come up. Hmm? Let us lock this. I think this time it is correct. Perfect. Hmm? No, no, not it. Just give me a couple of seconds. Eh? Yeah, perfect now. Hmm. लॉक किया जाए.
So it is technically it has already entered here. Okay, so maybe now it is properly calibrated. I think when this breakout came, it entered. Now this is very much in. So that is why many of them are already started saying we are back to long situation. Sir, India today's strategy should be sell on rise. No watcher, I don't think so. We have to only watch crude. The opening is below because crude has jumped to some couple of dollars. That's all. Okay, and there was some minor firing, and our Donald Duck has said that it is a love pad. I believe it is a love pad. For him, putting bombs is love pad. What kind of a narcissist psycho we have as a president in America? He's saying he's hitting the some container. I mean, cargo ship of Iran, and he says it is a love pad. God. So I think it should not be taken so seriously. Okay, maybe both have traded and they are only waiting for the thanks, William. Some fine confirmation from Iran that they are agreeing. So it is only matter of time. It is not whether it will or not. It is only when. So I don't think that we should be looking for shorts. My view, we should be only looking for bottoms and then buy from there. And also technically this is one of the main reason is we can see it in day chart, it is above our magic line. We know how strong our magic line is, correct? I want to boost myself saying our magic line has served really well, and this is the day chart of Nifty. It is telling very clearly till 24, what is that price, 238 or 245, I think that is the price now. That is below that. If Nifty doesn't go, there is a possibility we will be in long. We are exactly there, somewhere near that 233. As soon as I think market open, there will be one rise. I think once we keep maintaining about 245 today, let us put a let us just remember our day chart yellow line price is 24,245. Okay, and if it is above that, we should continue to look for only more longs. So it should not be sell on rise, it should be buy on dips. Okay, and let us see the sectors. Auto is down because obviously because the crude will have only impact directly on it. IT, FMCG is up. I don't know whether DMart result or some result has come, but I thought Britannia result was not good. CNS Pharma, Metal, Midcap. Okay, yeah, it's a mixed bag. Let's keep a track of that. And from the heavyweights perspective, Reliance is 10 rupees down. Wow. HDFC Bank 12 rupees. Bharti Airtel. State Bank of India. State Bank of India result is expected today, I think. State Bank of India, Titan, and one more major company. Most of the major shares are down, but even then it is 93 points only. Nifty is down. I think it will start recovering that at some point. Okay. So let us see what the market serves us for us today. So it is starting actually nowhere. Maybe it will go and test once 24 153. It's on breakout. Okay, watcher. Let me check that out. And 24,100, 200. So 300 is the one. There was kind of this thing, sudden drop we are seeing now. There you go.
So the call side I have provided. Let me see whether okay, done and dusted. Morning Manu, morning everybody. Morning Pratap, Prakash, Ajay. Good. So now almost now I think our regular crowd is there. I know because we always start off with Manu. You are not supposed to ask me that question. This is a trade setup channel. You should know. Correct? Anyway, there is a change in the table. I hope people can see that. Correct? Trend, momentum, price action. Okay, so trend represents our earlier APML. Okay, that is basically moving averages and cluster moving averages and the above and below concept there. And there is one tolerance that is being given. Correct? Whenever we say that Nifty, if it is romancing the yellow line, yes sir, so if it is romancing the yellow line, correct? So now we have given 12 points deviation from the APML to be neutral. So you will find even though Nifty is slightly above APML, till 12 points it does not cross, it will still continue to be neutral. Don't get confused. And then I will start getting question, sir, it is above APML and it is saying neutral. Because you can't immediately take it, correct? It has to close, etc. So there is a 12-point deviation that is being given from APML. It is again calibrated. We can always keep changing it. That's not an issue. No, we can do it just that. As of now, it is 12 points. So what I want all of you, those who regularly watch, see whether that 12 points makes sense or it should be more or above or less. Okay. That is most of the time when we say, when I draw the line or when the yellow line is becoming flat or when the candles are just romancing the yellow line, you have to only keep a watch whether it is showing neutral and when it is changing, etc. If there is something anomaly or some issue is there, of course we can go back to the earlier momentum meter and I will get it fixed by the technical team.
What is the support for intraday? Vachan, it is very clear, no? You need to tell me what is the intraday support. Looking at this, OI is towards put option. Obviously, morning they are writing both. No, they are writing put as well as call. You can see 24,200 call they have written 29 lakhs, and put they have written only 26. Where did you get Manu that? Manu, don't try to push me for PE. So there OI is towards put option. Where is that? I am not seeing. I am only seeing whatever change that has taken place from the morning. It is almost equal. You can see this is the strike. Correct? 24,200 is very much at the money, and at the money. So 29 lakhs of call is being written and 26 lakhs put is also being written. You can say, of course, 3 lakhs is more. I'm not saying they are writing less. Okay. So we will see. Maybe this 24,200 they will hold. Like yesterday they created for 24,300 straddle. They may end up creating 24,300 unless and until crude reacts. They will change, because that is they will play for this decay. It is my view. You are saying from my point of view it is on 24, 150 and 170. What is that by watch? What you are saying? Oh, okay, fine. As far as our this thing is concerned, it is below pivot. So there is first initially there is a opportunity for short trade can come. So there you go. Oh, it is already just at the verge of breaking and changing. But this is a must close watch, because it is making an inside candle. Remember, safer is to take it after R1 also. This is oscillating between this. Wait for it to sustain above. Okay. Okay. Oh, sorry Prakash, just let me check. Maybe I made some mistakes. Yeah, it is. Call is above pivot only. And put is below, no? Put is below. One more question.
24,350 CE sell. Yeah, that's a good range, because then you have to wait for see, as of now your put side may get affected. Maybe you sell the first call now, okay, and then sell the put, because put may, you may get more once it comes down to 24,100. See, my view is also that today this whatever is negative now, no, this is almost what, 98 points, this will get recovered at some point, okay. And because it's already what, 1 2 3 4 5 6, continuing from yesterday, it is ninth candle, which is, and we have got also red this thing coming up, okay. I told Prakash, I said it is at the verge of trying to cross. When I entered the put, I said it is at the verge of crossing, let it sustain about 235. That is why I said both will keep moving like that only, no Prakash. It is not that no, because they are rating both call and put, okay. Okay.
Okay, so let now the day low. I said I predicted the day low may not be broken, and the market will keep hitting you and say forgets. If that is broken, then all the way to 24,075 will be the point. Let Nifty. So if you have taken any short position, if this previous candle high that is at 24,282, if that is taken out 245, then you should close. Like if you are on the long side, the previous candle low is taken out, you should close. So if you are on the short side, if Nifty closes above 245, apart from all this, if it comes to anywhere near 245, you are supposed to close. Okay. I'm seeing only a bit of a sideways market between 279 and 159, even though it is a 120 point range. Let us see whether it goes below this 259. Once it goes below 259, then it will have a bigger run, because from 159 to 2475, that is another 80 points, which will translate into almost this 300 will come in the short side trade. Crude is flat, so that may be one reason why our markets are people were expecting some drop down once the Asian market starts trading in crude. That didn't happen. Maybe people will wait for some Q. The US futures, even though US fell 300 points or something yesterday, the futures were in the morning when I checked was in green. Yeah, even now it is 67 points. Nasdaq is 93, and European futures except Germany, rest of the other places is in green only, 27 points, 16 points. So kind of sideways. I think maybe people are waiting for some confirmation to come from somewhere. So it will be a grilling day. So let me remind you, by after 1:30 I will be off today. I don't know if Dhruv joins. We will have the session today for Dhruv, because he think he is the only one who is there. If Dhruv is not there, then by around 1:15 I will wind up my commentary, but charts will be there as usual. Nifty in some previous days in the morning making a base, and after 12 p.m. gives a good buying news. Yes, because after then I think the crude becomes active. No, at least nowadays.
may end up as a boring day because even Sensex is not moving much. Market, no. Usually, Sensex will give you a better feel how active the market is. Whether it should test the day low. Okay, when that it tests the day low, you will get 261, I think. Okay, at that point, be ready to exit. And if it goes below with a big body going below the day low, that is 24,159, then you can continue to hold. Something is there on marking stopping there. 180. Remember live trading? Balarsha. So many times I repeated that, and you are coming and asking that question. Eh? The famous Balarsa station, nothing more, nothing less.
Target 8. Thank you, light trading. It is only crude going up, sir. Crude going up, nothing more. Giridhar. Because yesterday it went up to 100, now it is 105. That is why. Whether if it sustains below, just wait, because this is a candle which has already taken the day low, so that has got some significance only. Now I think we have to wait for it to touch 24,075. Nifty will go there and you will definitely get 300. See, very long, no, the experienced players will see whether this candle low is broken or the previous candle low is broken. Those who are in between medium, if this candle low is high is broken, they will close. Others who are very conservative, what they will see, the previous candle low, correct? That is 24,169. Even if that breaks, the body goes up, they will consider immediately closing. So there are multiple ways you can trade. Okay. If you got stopped out again,
if the candle body goes below this green line, that is the day low, then again you can take the position if you got stopped out. So you can see very clearly only wick went below the day low. Okay, it was not a firm closure. The closure was above day low that particular candle. But once the body goes below this green line, again you can re-enter, because you got almost from 160 to 75. There is no stop in between, and still it is continuing only. Even though some high-end shares are beginning to kind of reverse, because 32% is the price action, momentum is almost still has got some way to go actually. Crude is above our APML in 10 minutes chart, as well as just trying to cross the VWAP. Once it crosses VWAP crude, no, then it will start making, it may pick up another couple of dollars. So this is a Aram se trade. Let me see, after this trade also, out of 46 people watching, how many hit the like button? Only 17. It doesn't cost money, sir. It only helps the channel to come up in the YouTube algorithm. And I also won't know who are all liking. So people who are want to remain anonymous, you can feel free and click the like button. I won't know who is liking. We don't get that information also. So feel free. Let me see. 6 people added, 17 to 63, 46 watching, exactly 50%. ये बहुत बेइंसाफी है. Can you explain the momentum percentage? Momentum percentage is simple, Charam. You got 2 leading indicators here and 3 lagging indicator and 2 wave trends.
with a priority, with a weightage for more on leading and as well as on wave trends, in the last being your lagging indicators. There is a percentage is given for various indicators that follows 8. So that gets evaluated. See, simply saying long is different, but trying to evaluate. So there is an internal calculation that is done for each indicator. Collectively, whatever is the percentage that is put for those 7 indicators is what you see as short, etc. Jivita, my name is Sudhakar. Sudhakar Jivita. Got it? Cha? Ram, did you attend the session or not? Jivita, for information, my name is Sudhakar and I run this from Chennai. Yes, if it is below 40%, Ram, 40 to 60 is neutral, 0 to 40 is short, 60 to 100 is long. So when the momentum is 40 and below, it means that most of the indicators are pointing towards market going down. Okay. If it is between 40 and 60, it means market is not clear whether to go up or go down. If it is above 60, it is long. My dad also working in Chennai, sir. Okay, super. Our entry point 235 is 9 EMS support and premium chart. We can have one more entry, it seems, in put trade. I don't know, because we started making green candles, correct? Live trading. See this trend, correct? Like yesterday I explained, correct? Trend, momentum, and price action. Trends tells you whether which side market is going to go up or go down or stay neutral. Whether it has got speed or not, momentum will tell you. Whether there is a good support on price action, top 10 charts is telling you. So that is the 3 axis this channel setup is, correct? Options will come later. So it started making green candle. In our channel, once it starts making green candle, you don't look at any short side or any put. It has to let it turn around, then it will take. My view is that it will go all the way to yellow line. You can see the yellow line is coming down, correct? See, the yellow line is coming down. What does it mean? Yellow line wants to meet. The twain shall meet. You can see what will happen. It will come down here and yellow line will be here, and then it will try to cross and go up. Meanwhile, we are getting a long situation. Wait for the next candle to become green, or if at all you take, as long as if this candle low is broken, you should close. So technical stop for you for any long position now should be 24,159. Live trading, hope you don't mind revealing your name. When we'll open WhatsApp group? For what? No, we already have a Telegram group, okay, but now that is slightly inactive. We are setting up lot of things, so and we are also some legal confirmation is also should be there whether we can provide calls on shares, etc. Earlier we used to do. So WhatsApp group, tell me what purpose it will serve, Jevita Rajsekharan.
stock related info. There is too much. See, number one, I think you have to be a SEBI registered guy to talk about all that. Okay. Once if we make this channel private, we can do lot of things. Okay, so the company is thinking in those lines, to be very honest. So the other two directors are thinking in those lines only. So even if the legal team at some point pushes, says that no, you have to be, even though you have a small dedicated crowd, it should move to private, then SEBI nothing will come into play. We may opt for it at this point. So there probably will have a free hand to do many things, because it will be a exclusive group. So it doesn't have to be. That is our understanding. So we are checking it out. Watcher, no shares comment. Hey, let me get some water and be back. I asked you regarding class, sir. Which class, Rasekran? I think you are Jivita or Rasekran. I'm get confused. So I tend to. First is it Jivita or Rasekran? Sure. Trading class. You mean to say a separate? No, we take this session. No, when that trade setup session nowadays, whenever new people come in, if they say hi and introduce themselves, I set it up. Alternate day, I take that. No. What other session you are talking? If you are you want. You can, most of the things you can ask here. It should not be a problem. So others also will benefit. See how to trade this setup. I think so many times I repeat. Correct. Very like a broken record. If anything else is there, no, you can always feel free to ask here, because of your question. See, I don't know why people. See, it is not everybody knows everything, correct? Even I don't know many things. Yesterday, somebody else asked something. I said I don't know. In the same way, whatever level, it doesn't matter. You simply ask. If you are very very new, ask what is CPR. It doesn't matter. No, it is not wrong. Asking, one should not hesitate. So you please ask, and then there will be different sets of people watching. Out of 42 or 45 people watching, 10 may not, 15 may be expert, 10 may be very very new. It doesn't matter. And everybody will have whatever doubts that they will get cleared. Even those who know very clearly, either they may get something new out of that, or they will know whatever they are already know, they will get. It doesn't matter. No, you can always ask questions here. See, if you don't ask questions only, I will start doing something else here. So if more questions are asked, I get engaged and I start answering, and I also learn. I also read and do. Somebody asks a question, I go back and see during the weekend, I note down and see, I try to understand what is it. Feel free. See, the second you start setting up sessions and then start charging money and all, no, that is when things become very commercial. So as much as possible, we wanted to be no commercial. You know, this whole idea of the setup was to, what triggered us was some lengthy discussions about how people are losing thousands and thousands of crores every year, especially the option buying people. So we thought we should provide a system which is optically easier for them, at least to avoid more than 50 to 60% of bad trades. That is the premise on which we started this. So now if I start running sessions, then it has to be in some other place. If I book a place, then it will tantamount to money. Then I have to start charging for people, all that, and you have to be even a much bigger expert to do that, which I don't think I am, basically. That is also another issue.
Angel one stock breakout. All the capital goods stocks have done really well in last 1.5 to 2 months. You take BSC, MCX, Angel One, or couple of other stocks, all have done well. Okay, because that is eternal here. As the market keep expanding, they will come out with new products and they will make more money. More and more people are getting involved in trading, both F&O and now commodity market is also picking up. So every broker has both commodities as well as NSE and BSC. For them, it is ever expanding products and ever expanding population. Correct. We hardly have 3.2 crores demat, out of which 1.9 to 2 crores active traders. That can even become 5 crores. Means imagine all these people's revenue will be 2.5 times. So long range, you simply should buy BSC, and as and when NSC comes up with NSC and then MCX, forget. Simply forget. Do nothing. And then there is no limit for those shares. Take it granted. You can ask me future if there is any such issue. There is no limit. From 3 crores to 10 crores also can become active traders, correct? Those shares you should never touch. Whatever happens, unless and until something really bad happens, no, otherwise they will all be returning. They may go down because of SEBI restricting something, etc. But again they will pick up. There is one problem they will never face is volume. Correct? There is, now you can see very clearly, as soon as one of the thing has become green, the momentum has already become to neutral. So you can keep watching it. If everything is red, it is only put you should take. If everything is green, only call you should take. That's it. So this new table on the right side, now you see tick by tick it will change. Momentum meter, one of the wave trend has become green. Immediately you can see that is correspondingly that has crossed 41% and has become neutral,
and maybe a couple of more, 2 3, then it may become long. But you have to check for trend, you have to check for price action, and all three becomes green, and then start looking for calls. Crude is going up, so it is not a good sign. So we can see very slowly this day low and this point. Maybe if a yellow line comes down, fine. Otherwise, if yellow line start to flatten out here, maybe kind of ranging. Some humor. Tell me, yes, please say that. Morning, morning, Mohan. What is that? Some net test 24 180. Obviously, yeah, it can come down if it goes below 159. The second it goes below, body of a candle starts being made below 24 159, it will test S1. That is what our charts are telling. Bengalis are struggling to get resignation letter, while Tamils are struggling to get appointment letter. That's a very good one, yeah. People come up, no, that innovating humor is really big in India. Huh? Somehow I always strongly feel we all can have very, very good laugh. We are not a very serious crowd. We can laugh big, big issues just like that. Bengal is struggling to get resignation letter. Pratap, I think you should try. You should kind of give this to your own WhatsApp group, etc. Pratap, you are there. Very nice one. So let me share that to my group immediately. We have a seniors group; they will really love it. I think you should read what Srikswai says.
No, did you read that? What the humor that from WhatsApp? Trend is long now. I'm a bit surprised why the trend is showing wrong. There is some calculation on APML because 12 points only it said, and yellow line is at 231. Hmm? Yellow line is at 231. How can it be long? I will make a note of it and send it across. Hmm? Because it shouldn't be long. It should be long only if it comes anywhere near 24 223. Sorry, somewhere 230 or something, 219. Yes, very true. Okay. I just sent a message in our group that to the technical team that this is happening on the momentum meter. Crude has turned away from the VWAP. It was trying to cross the VWAP. It didn't cross. It is going down. As expected, it is coming towards trend line. Our APML trend line.
As we were speaking about capital markets, no, BSE was 48 rupees down, and we were speaking about capital markets. I was telling you should go ahead buy, for long time and all. From 45 rupees, it has become 14 rupees minus. From minus 45, it has become 14 rupees minus. 30 rupees it recovered after as we were speaking. Okay, so just a 10 minutes break on the video. Whether it will cross and stay above yellow line or not is the question. Another 20 cents down. Nifty, crude will go below even yellow line, our magic line also. Morning, Shankar. Morning. See, this 269 will come at PDL. That is the previous day high. And it is also coincides with our CPR. So those who have multiple lots, as soon as its Nifty touches 282, close at least 50%, there will be one small dip from the CPR. Again, it may go up. I'm not saying it will definitely drop down. Again, once it starts making a clean green candle about 282, then you can take it up, because the high is much higher. Correct. I'm surprised this previous day high is wrong. Oh, that is previous day low. Yeah, previous day high is much long. So once it starts making a clean green candle above PDL, then R1 will come and then it will go up to PD high, PDH of the previous day. I said no, I expect Nifty to end in green today.
Nifty trying to break the day high. Where live trading? Brent crude is falling actually. Where do you say it is day high? The day high is this point, no? It started off here 24 330 or 321. One second. What is the open price? That is what is day high. Yeah, 233. Correct. You are correct. But anyway, now 269 should come. I think the option is showing really good strength. Option is showing good strength. Okay. Now crude should fall. Crude should make a big red candle. Okay. Then PDL, previous day low, will be taken out. Morning, Shankar, Suresh, Brent falling. Anyway, let me check the. So our team checked the how many times that weak point has been touched. Okay, in last 10 or 15 days. I think they could see it only in 3 trades. That is, once it is crosses and then going back to weak point, meaning pivot is taken out and then in going down. In last 10 days, I think they could see only in 3 trades that has happened. That too, it didn't sustain for long. We used to have one of the viewer who used to maintain this trades list, etc., and send. So then we used to know very clearly. Price action is saying 37%. What does it mean? Because trend is long. Yeah, trend I already told, no, Ram, that I already sent it to the team. They must be checking. This short is on the top 10 shares. See, you can see. Reliance down, HDFC down, Bharti down, State Bank of India down, ICICI. This is in the same order. TCS down, Bajaj Finance, L&T. Except Hindustan Unilever and Infi, nothing else is in green. That is why this is short. Okay.
I think the team is working. Anytime we should get the code. Hmm? I think some minor tweaks. There is a couple of calibration errors, number one, and number two, setting parameter setting errors are there. That is why this trend is showing long. Even though it is correct now, it started showing much earlier. Correct? Here itself it started showing, which was wrong, because the deviation is supposed to be only 12 points from the yellow line. That is the tolerance that was allowed. Let us hope they will come back. See, crude stopped falling. Rumors that Hanta virus is spreading. Array, yaar. What is this Hanta virus, yaar? We are. This is very bad, yaar. Something else that comes up in rumor. I don't know. Sometime back there was this. Suddenly they said in Kerala it is spreading, and that day Nifty fell some 60-70 points, and then it turned out to be a false rumor. Sanjus, where are you getting this? Is it very authentic source? Reliance record 50% of the losses from 10 rupees to now 5 rupees. The problem is with the HDFC Bank, State Bank of India against, there is a results today, and then maybe the positioning is happening. TCS down. Of course, that is getting paired. The gains are paired, the loss is paired with Infi. Apart from that, no major. What is Bharti doing? Bharti is also in red. So these big shares has to turn. So this has to become at least neutral. Now yellow line has to turn and then go up. It has to now flatten out and then go up. Once it starts going up and you start making green candle, you don't know, sir, news heard like that. May 6th, first COVID case was detected in China. From the, now after 7 years, Anta virus reported on the same date. Oh God. And by the time it came and collapsed the market, it was March 2020, correct?
Hmm. Standing still, Nifty is just standing till again 219, 220. Our Vijayawada station struggling. Of course, yellow line has now come up 24 199. It is almost 1.5 hour. Let us check the OI change. 24 200 solid support. 97 lakhs put against a call of 90,000. So 24 200 will be a solid support, unless you, so whatever that is going down, they will start writing more and more put. So each red candle they will write more put. Okay, we will wait.
So just I was just checking the engine. 1 second. Second by second. This is second by second. So when you have to test an indicator that has been developed, see the speed in which things are changing. This is by second. Just for fun. Now this is boring, compared to that. Because I am watching it because the team has sent me that revised file. Whether it is responding correctly, I am trying to check here in the other display. Actually, if you see even a shorter time frame, no, except for sometime, generally it moves around only the yellow line, so it doesn't serve purpose. What you can use it as probably the second by second is on the options chart. $24,100. Once it goes below your yellow line, all your calls are off. Okay. The thing is, crude is not going below the APML. Crude is still staying here between VWAP and APML. Okay. It is negative only because the APML has crossed down on the VWAP. Commodities VWAP is a very important line. It is gone below that. So it means that it is at some point to break down below the magic line and go down, starts to go down. But ours, this market is playing games.
Yeah, now it is making a red candle. It is trying to go below the APML, but it is not yet. So this small drop seems to be, since the crude is technically getting weaker. This is a larger time frame. Okay, 10 minutes chart. We are on 5 minutes chart. In a larger time frame, it is weakening. Maybe it wobbled a bit, and then again it is reversing and going up. Anyway, it didn't go below yellow line also. Hang on to it. I don't think it never went to ever went to 210.
is okay. One quick question. Ah, now it is crude is making a clean red candle below magic line. Usually, let me show you that. So this is crude chart. Usually it goes below, it goes down. Of course, it can also reverse. This is 10 minutes chart. And the second it crosses our yellow line, starts making a clean candle. See the way how our magic line works, even in crude. So here it is kind of hobnobbing, and also it got flattened out. Even now it is still flat. For me, the tip will come in the next 10 minutes candle once this yellow line start going down like this. See here. So see here, once it went flat and then once it turned around, that's it, all the way down. So this yellow line, how it turns at the 5 minutes or 10 minutes change and bar close is also very critical. Okay, I will keep a watch on that. Whether now that continues to support our market or not. Yes, how to select the strike price for your trading? Two things. Yeah, one is your capital. Okay, and I always prefer if Nifty is at 24,000 exactly, to be no easy for calculation. I would always buy 23 950 or 900. Okay, and that is on call side. If it is 24,000, I am buying a put 2450 or 24,100. See, the delta may vary as you go deep in the money and at the money and deep OTM.
Okay, so meaning you know what is delta, correct, Saurav? That's it. See, that is there in, I don't know how many of you check sensible. So, just since you asked, okay, this is the option chain in sensible, okay. This is the option chain in sensible. This for you, Gaurav. You can see the delta here. So, this is if 1 rupee change, for example, we are at 24,250, okay, 24,250 and 250, and you can see that as it 300, as it is in the money, this is put. So let us look at call, because we are in the call now. So 24 250 means 200 will change 100 rupees, meaning for each 1 rupee change in Nifty, where is that, sorry, this 36, 250 in the money, 36, that is 36 paise. What is this? Correct. As it go deeper and deeper, you get bigger and bigger change. That is for 1 rupee, 1 point Nifty change, you will get 36, 39, 42, 45, 47 as you go deeper in the ITM. As you go out, no, OTM, as you go away, because 24 250 means you are, this is OTM, this is only ATM, and this becomes OTM, correct, out of money. Then out of money 21, 27. For example, you buy 24,500, for 1 point you will get only 17 paise. Okay, so this is what you need to check. So it depends upon your this thing. Okay. That is why most of the time you will find I will try to select 24 200 or 24 150. Meaning my this thing is also run at minus 2 ITM only. The strike price for call and plus 2 on this thing on put. That is where I'll get almost 39 40 paise, 38 paise per this thing. So it is easy. That is how it calculates. At the money it doesn't calculate. It doesn't take 30, I mean at the money 24 250, that my entry point flow doesn't calculate on that. It will calculate either minus 1 or minus 2 for calls, plus, plus 1 or plus 2 for puts. And it is freely available in sensible. So if you have oh god, I think my multiple brokers are there. Log in with Zerodha, Angel One, Upstock, ICICI Direct, and in fact you can sign in with Google also. You don't need, if you don't want any broker, sign in there. Like yesterday, there should be one sudden drop that will make life easier.
Market entering the sideways zone now. We can very clearly see it's 11:30. It is centering into sideways zone. Is Dhruv joined us? Dhruv, are you there? If you are there, say please yes. Then we will have the session at 1 o'clock. 50 to 100 points ITM. Okay, yes sir, yes sir. Fine. Oh, okay, you are there. So 1 o'clock, have you gone through that video, Dhruv? Yes. So if you have gone through that video, instead of 1 o'clock, we will have it at what 1 or 12:30, because one I would like to kind of from 1 o'clock there won't be any commentary. So is it okay for you 12:30? Fine. I assume it is okay. So we will have it at 12:30. Market very tight range. Maybe they would want that the love letters between Iran and Israel to be stamped and sealed. Maybe market will wait for that. But the clue can come on crude movement, okay? Not crude movement, crude oil movement and price movement. And probably if it falls, makes a big red candle, then our market can go up. Otherwise, maybe it will wait. Reliance is the drag here. Last 2 days happening on weekends only. Yes, you are correct, Dhruv. Boring, boring.
It is in advance saying short. There is now alignment on the short side. I think those would have already got out on the long side, and this price point also has come. Even though crude is falling, our market is falling. After 132 we can see movement. Yes, Drew, let us see. Anyway, but crude is making solid red candles. So even if it falls, I am not following it beyond. I don't think it will go below 159. Okay. So even if you are entering any short position now, as soon as it comes anywhere near 159, be ready to close it out. Whatever shots you are taking, futures, option or selling call, whatever it is.
Sir, I'm planning to long when it touches okay. Dhruv, let it know anyway. Left to you. But you have to wait for a green candle to come. Okay. Your assumption is that once it comes to 24, 159, market will turn around and reverse. Correct? That's a fair assumption. But let the chart tell you it is turning around. If it starts making a candle with the body below 159, then you are at risk. Okay. Testing day low. BNF testing day low. Okay. Crude has started to make big red candles. So those who are attempting because of red candles etc. on the short side, be wary. Crude is trying to make bigger and bigger red candles. Suddenly we don't know because this is usually it pumps up and then there is a big drop down happens. Okay, the news gets totally, maybe the news is getting circulated, this something I don't know. So beware of any short side, because long side yes, but short side you should be careful.
See, you can see the yellow line which is flat simply. So I am not expecting any major movement now. Even though crude is making going down, it is already at 104. Hmm? Crude is making a big red candle here, started to make each candle size is growing bigger and bigger. You can check it out here. See this. It is making bigger and bigger. So once it starts making a bigger candle, maybe even it go down to 100. That should be good for our market. Just to be, the reason I am cautioning you is, don't overtly think that since there is alignment etc., it will run for long.
because if crude makes another one big green candle, no, sudden reversal will come on our market. That is the reason I am showing that crude. Don't, because you know India is a put loving country, people love put. As soon as they enter put, they try to hold it because it will fall. It will not, many times it does. But I am just cautioning you. There is a possibility sudden reversals can come. I am fine, yes, after a very long time. Still struggling with that static IP issues in my family office. No, when you run multiple accounts and copy trading and all, no, for your family office, etc. Nowadays, each account when you run API on it, correct? Whether it is Fireseed, any broker from 1st April, each account has to have a whitelisted IP. Otherwise, you won't be able to. For example, I can't trade on your account, even though I may have login credentials, etc. and all. Your IP need to have a separate, your account need to have a separate IP. Mine, if I am using any of the API, you see, generally I can log in and trade, there is no problem. But if I say, let us assume whatever I am doing, and that if I wanted to copy trade on your account, and I have no third party engine development, all that put together, it can't happen unless and until there are no IPs. IPv4, I think IPv4 IP or 6, I don't know. Your lighting shows us YouTube features. Good to see that. No, I didn't get that, Niaz. Your live stream shows as YouTube featured. Oh, okay. What is that? Where do we see that? Natural beauty shots. Are you new to this channel, sir? Before I answer your question.
नेचर ब्यूटी शॉट्स। आप नए क्या इस चैनल के लिए? आर यू न्यू टू दिस चैनल? Yes, what? Okay, okay, got it. I fixed it for my needs. Yes, Ajay. Nia, so what is that you are saying as a YouTube featured? Good to see that. I didn't know what was that. Nature beauty shots. Please answer my question. Are you new to this channel? Before I answer your Adani green energy issue. Okay, where are you from, sir, and what is your name? Crude is making bigger and bigger red candles. Beware of all your short positions. When I opened my YouTube on my PC, showed like that. Okay, YouTube featured tag was there. Oh, okay. Sherin from Kozhikode. Sherin, so since you are first time you are coming, uh, let me give you a first. This is not a buy sell call channel. Let me tell you that. No, you are not going to get buy sell call etc. and all. This is a trade setup channel. And how long you have been trading? You are a buyer or seller? Sherin, are you a buyer or a seller? And how long you have been trading? Super. I assume you are a buyer. So, Sherin, to trade this setup, there is a video that just now I attached in the comments. Just have a look at it. It's only 10 minutes video only. Before 10:30, you please before 12:30, just check it out, the attached video. And 12:30 today, I'll be explaining to one more person, Dhruv, who is also a viewer. Today I will run the session. I will explain you how to trade this. Okay. If you are looking for a buy sell call where people will tell you buy 24,400 call, sell 24, buy 24 to 200 P and all, that will not happen here. Okay. So that we won't tell. We will only providing a trade setup where once you understand, you will be trading out without my commentary. You will be able to trade. Okay. So then you just check out the video if that is fine with you, and join us back again by 12:30. I will take you through this thing, what will be the how to trade using this, and we have been improving because you will find that video is not fully updated. What I will give you is a fully updated one. Okay. And regarding Adani Green, it has based on some issues etc. and all, it kind of collapsed almost to 800 if I remember correctly. Now it is back, and it is definitely on the long side now. I'll be back in a minute.
is falling. Maybe once it comes down below 100, then our market may do, yeah, red candles, but no movement in Bank Nifty. You are welcome, train. It is making big and big red candle. Market should recover here. Crude is still, crude is making some solid red candles. Okay. So those who are having some short positions, be careful. At least market won't fall. I am not promising that market will jump up and go and all that, but market won't fall. That is for sure. Because once the crude is falling, crude was the only factor we opened lower, correct, today. SBI released at 1:30 p.m. Okay, that must be the reason live trading that BNF is waiting. Okay, see, that is probably the largest bank. I mean, not probably, their largest bank.
even though by market cap HDFC is bigger, the largest bank is State Bank of India. Usually they come up with good results. So just for let me check whether how the positioning has been for that. See, multiple things you can check when you want to really check one stock. Okay, so what you can do is you can go to analyze open interest. I think sensible people should pay me some money here. Huh? I am doing so much of selling. State Bank of India, okay, intraday custom, and it is, what is that price now? Currently it is at 1083. See, the 1100 has a phenomenal call rating, okay, meaning almost 86 lakhs compared 1 is to 2. Overall is India PCR is 0.06, but this is 1 is to 2, so a lot of people are expecting. But let us know, while let me check the State Bank of India. So this is for primarily not for buy or sell of. I am not looking at from that angle. Uh, State Bank of India. Why I am only looking at what will be the impact on the Bank Nifty, because State Bank of India means what it will do, whatever its results, that will get reflected on many of the PSU banks also. They are also in the index. Of course, the private bank have a bigger weightage to it, but whatever said, there is overall dampener. Correct? It is a sentimental dampener. If State Bank of India's result is not good. In our setup, it is in long, even in day chart. Okay, as long as it stays above 1089, it will remain as long. So once it goes below 1089 during any day, it will have support at 1081, or it can go down even to 1055. The positioning has been on that 1100, it won't cross. Usually State Bank reacts not the same day, it usually reacts next day or the next day. So there can be some knee-jerk information based on loan growth, NPA, etc., etc., and all NIM, etc., and all that. Correct. So just beware. But technically it is long, and from yesterday, from the low point of 59, it shot up almost 1100. 41 rupees. Yesterday was a candle size. So maybe most of the thing buying that was supposed to be done is already done. The positioning is long with a caveat at 1100 will be the top. So that is what is the status of State Bank of India. So if it crosses 1100, we can expect a big rally in BNF. That is my conclusion.
So much time pass in the market. Yes, Dhruv. Time pass only. You can see the second, usually you will find me becoming silent when the yellow line becomes flat. You can see the yellow line clearly tells you the market is in sideways. It is a flat parallel line to an R1 or R3, correct? Once that is the case, finito. No, yaar, Suresh, it is stopping and falling. It won't fall like a waterfall, correct? Unless until some big news. It is weak. In 10 minutes, in larger time frame also, let me check. In 15 minutes installment, it is short. 15 minutes time frame. In 30 minutes also, it is very, very short. In hourly chart also, yes. In hourly chart, it is at, if it goes below 104, okay, as of now, it went on, in this candle is almost 103. So once it goes below 104.17, even in hourly chart, it will become short. So as the time moves on, it is becoming in a longer time frame short. That is how it moves. First it will move in 5 minutes, it will become long or short. Then 10 minutes, 30 minutes, as it continues its side's momentum. So now it has come up to almost 1 hour chart. Once it goes down below 1 hour chart, then only 1 day chart, then it will become, for the day at least, it will be short. So it will slowly, because maybe it is taking stalling at that point. In 1 hour chart, exactly our APML is hitting. So whether it takes support there or not, we will know in probably next hour. By 1 o'clock also, we can check other what is happening on the 1 hour chart. In sell, good. What is it that you want to do? You want to do intraday buying and selling, or you want to do multiple days? First, first tell me that. Then I will answer your question. See, we are worried about intraday, correct? So only we are worried maximum is even 10 minutes, 15 minutes chart should be sufficient. See, what you want to see is whether in 10 minutes, whether there is a upside momentum or a downside momentum. That's it.
A good will be 30 minutes. 30 minutes also will be really good. Maximum. Because your trades usually last only 6 to 7 candles. That's it. Once you enter within that 30 minutes, if it maintains, even 15 minutes also should be really good. Directly crude futures, that is what current Brent, you can look at the spot price. Why you have to look at futures and all that? There are so many spot prices globally. They react much faster. So then that will be a better option for you know. Crude is now making a green candle. So it is oscillating now. So is the new table price action is about top. Yes, you will see it is both matching. No problem. Yes, Bharat, same thing only. So yeah, see, I explained yesterday also, correct? Yesterday you were there, no? I talked about the three axis which we worked. So now we are finally coming down to that. Trend, momentum and price action. For intraday trading, only those three is enough. Okay. And then later we added strength and weakness chart for options.
Nifty is just doing SL hunting. The big size is also bigger, yes. But you see, nothing much is happening, Dhruv. Nothing much is happening, no. It's all going up, down, that's all. You can see, as long as the candle romances the yellow line, this is what will happen. 12:30. Dhruv, you are there. We will wait for Sherin to come back. If Sherin has come back, at 12:30 we will start the session. If anybody else is who has joined this channel first time, please say hi so that you can also join the trade setup session in next few minutes. If you are new to this channel, say hi and introduce yourself. Where are you from? How long you have been trading? Then you can also join the session and get clarified. Whoever is watching for the first time, say hi.
Okay. Sherin, are you there? If you are there, please say yes. Then we can start the session. Sherin from Kozhikode, correct? I think she said she's from Kozhikode. Yes, Sherin from Kozhikode. Oh, you are there. Super. Okay. Dhruv and Sherin. Those who are also watching anonymously, if you have questions, you can raise. But anyway, uh, both of you, do you know what is an Ekinashi candle and what is CPR? If you know both of it, please say yes. Or if you don't know any one of it, please say which one you don't know. Ekinashi candle and a CPR. Okay, Dhruv knows CPR. Sherin, how about you? No, okay. See, I will see normally there are multiple different types of candles, okay? And there is one which is very funny is Renko. See, these are all different types. This is bar candle, okay, and this is normal candle. This is hollow candle. Now you have line, area, so many different lines, correct? Of which you got some Japanese style candles, mainly to Hekinashi and Renko. See, you see this candle now. Are you getting any feeling of any trend? No. But if I change it to Ekinashi, you can see we are clearly having a direction of trend. So that is why, since we are basically having these three axes of trend, momentum and price action, the best way to represent it, Ekinashi clearly shows trend. It eliminates the noise. It doesn't make simply open close. It recalculates open, high, low, close, etc. and puts it whether it is a trending which side. So it is giving you a trending candle. It's a link to previous one, etc. And CPR, how about you? CPR, you know, Sherin? Okay, CPR is central pivot range. Based on, see, what is it does is, if you see the one same thing in a day chart, okay. So this is what is your day chart. So each candle, so this candle size is 481 points. This candle size is 200 points. This is candle size is 224. Whether it is plus or minus, fine, different. So each candle moves up down. But if you see this candle sizes, even though it is 481, its open was at 756, high was 380, meaning 280 plus 280 plus 250, 500 points. That is the range. Even though finally candle ended at 250 points plus or 200 points minus, the range is between the low and the high. The low is 756 and the high is 280. So that is the range, 500 points range. So based on that range of this thing, what the CPR, central pivot range, calculates is based on 14. There are multiple periods they calculate. Okay. What it does is, you can see these yellow lines, no? What it is saying is, based on the last 14 days, Nifty can, in fact, let me get the S5 also. Oh, I have not added S5 yet. 1 second. What happened? Why S5 is not coming? Right, line with. Oh, this is Woody.
Anyway, we didn't go anywhere near. So based on that range, what CPR, there are multiple types of CPR, central pivot range. It creates a central line and says, okay, R1, R2, R3, R5. I mean, how far it will go up, how far it will go down. Because different candle has a different range. Based on that 14 day period, etc. and all, there are calculations method. Based on that, it gives you a range for the day. Maximum it will go, never it usually goes below S5 or goes above R5. Very, very rarely it does. That is very, very extraordinary day. Otherwise, it remains within that range. If you want to know very clearly today, whatever happens, if you buy a call, the maximum it will go is only 25, 24, 727. That's all. Usually. Even if it goes, it will come back, you will see, go back and check any day. That S4 and S5, S5 and R5 will be the maximum. So it calculates the range. There are multiple methods of calculating CPR, but what we use is Camarilla pivot. There is traditional, there is Fibonacci, each will draw a different line because the calculations are different. That range calculation, classic. So, but what we use is the Camarilla pivot. And go back and check our videos. You will find exactly in those pivots only the market will stand, take either support or resist. Okay, clear? Dhruv, for you, what we use is Camarilla pivot. Okay. Any questions now? Tell me. Any question? Okay, so I think I assume no questions. So this Camarilla pivot and this Ekinashi candle, those two are direct from TradingView. Only those two are standard. Rest everything what you see in the screen is not available. It's all own development. Camarilla is better than Fibonacci. See, pivots, they also calculate in only different way here. So Fibonacci is a fixed price, correct? Basically. So pivots are better because it considers both open, high and close. Okay, for intraday, Camarilla pivot is better, definitely better. We have seen, you can go and check our videos also how perfectly it gets aligned. 90% of the time, it is really perfectly aligned. Only those two are coming from TradingView. Rest everything what you see is developed by Richesse Ventures Private Limited. Okay, now we have a table here, momentum here. So let me now start from this place. So like for intraday trading, three things you need to have. Correct? Okay, trend, which side is the market is trending, so that I will take that side. Then there is momentum, whether the trend it is running in 10 kilometer speed, 30 kilometer speed, or 40, 50 kilometer speed, going towards a support or a resistance. Just a second. Okay. So suddenly all my screens vanished. I was wondering. So then price action. Okay, these three is the axis in which these whole charts are prepared. So
bottommost price action. Price action comes from top 10 shares. What we have done is we have taken the top 10 weighted average, NSE has got weightage. It has got 50 stocks. You know the weightage, correct? Both Srin and Dhruv, there is a weightage to the stocks on NSE. Do you know what it is, and any understanding on that? Okay, Srin knows. Dhruv? Yes, exactly. Reliance is the big boy. So we have taken the top 10 shares. On the back end, we are running it on 5 different indicators, including smart volume, Ichimoku cloud, and all that. Tick by tick, each share is evaluated, and whether it is long, short, neutral, and a percentage is given. Short is 0 to 40%, 40 to 60% is neutral, 60 to 100 is long. So that percentage calculation is done and is represented here. 40.9 now like that, 41.2 like this. So that is what is also coming here as neutral. The price action is saying, because it is in between 40 and 60, it is saying neutral here. Then what we have is momentum. Momentum is this momentum meter, which has got 2 leading, 3 lagging, and 2 wave trends. You can very clearly see whenever this alignment is there, the fall is steep, it will start falling. When it is mixed color like green, red, etc. and all, like here, for example, you can see it is not all green, all red. So then you will always find Nifty hanging around, romancing the yellow line. Okay. So that is why there is alignment and there is no alignment. So when there is an alignment and then percentage is less than 40%, then it is short. And there is green alignment like this here, then this will be long. In between will be neutral. So it is telling you momentum. Momentum is velocity and speed, nothing more. Okay. Once it is above 60, the green candles starts making, then you will find market going up with velocity. So it will tell you the speed in which the Nifty will move. Okay, there is no, as I speak, there is one thought has come. Let me take it to my, before telling you, I'll tell it. What's happening? Something is funny happening. This act here. OBS Studio reconnecting. The problem is, okay, you are there. Everyone is there. I hope so. Are you guys there? Srin and Dhruv? Okay. Dhruv, okay. So that is getting calculated. The momentum is telling you. Momentum is also short, meaning momentum is also negative and it is rushing towards. There is speed. And then what you have is the trend. The trend is below this Akshaya Patra. What you see is one yellow line, correct? That is also another development from our company, which is clustered moving average. It's not something we invented like Einstein or something, but what we have done is we have taken certain specific moving averages and fine-tuned the parameters to give us a view. That is called Akshaya Patra moving line, magic line. Above that, if Nifty is making a clean green candle like this, it is always a long. Below that, it is always short. So that is why we also have to now, you can see once it flattens out, market is in sideways. Once it starts falling, you can see market is falling.
Once it starts going up like this, the market is also going up. So this is also another trend. So Ekinashi candle and the APML put together is what the trend is on the top. That is telling you the trend. Momentum meter is telling you the speed. Price action is telling you whether that is also agreeing for that side. If everything is short, you can see everything is short now. Puts only you should take. You should never attempt to take a call and all that. If you see a red candle, clear red candle, never ever buy call. If you see put, if you see green candle, never ever buy put. By the simple optics itself, you will avoid more than 50 to 70% of your bad trades. If you stopped making bad trades, that is enough. And also we keep saying, don't think and trade. Don't think and trade. Don't think. We can't think what is happening into the market. Absolutely no. We are what? Nothing, no. What is our this thing capability? There is nothing. We can't think. Don't think. Look at the chart. Chart is telling you, I am going down, I am going up, I am flat. You react to it. That's it. You respond to it. Don't think. Don't think and trade. Also, another thing I most often repeat is, I will come to that later. The last thing is about this. Okay, now we have covered everything related to Nifty. What about options? Because we are either buying or selling options only. These two represent options. Which side is strength? So you will most of the time you will find only there are only two represent. One is for call and one is for put. Okay, I will usually take one CE and one put. If the price is above the pivot point, that side is strong. If the price is below the pivot point, that side is weak. That's all. If it is strong, now this is up to 264. How far it will go? It can go to R1, it can go to R3 also. R2, that is 300. Now it is already crossed R1 again. This is the second time it is crossing. Okay, based on that you will know which side is strength. Then you buy your own put or your own call, or sell or buy futures, or sell opposite side. That is, if call is stronger, sell put. If put is stronger, sell call. So you have a total overall picture, and if you really carefully do, you will not, you might not lose much money. I don't think, I'm not telling you won't lose. There are some 3-4 trades that will also go to weak point. That is, weak point is the one. When it goes below that strength is totally gone. Call side strength is gone. Now it is below 210. That's it. Call side strength is totally gone. You cannot have a call. So that is the leeway for you to go down and then come up. Okay. So 90 to 95% of the time, at least you will be on the right side of the trade. Whether you will make money or that is different, but you will be right side of the trade if you are using these charts. Okay. Now, the other thing I told you is that don't think and trade. In the same way, the function of the market is to take the money from impatient fellow and give it to a patient fellow. What do you mean by that? Day trading does not mean you should always have a trade and your profit and loss account flickering. That is not day trading. Day trading is all about entering in the right time, taking your 30-40 points, come out. In a week you accumulate 150 points positive, you will see your capital growing. That's it. I will stop here. You can, and this is futures, just giving us what is the future versus spot in the small box. Premium means people think that market is going to go up. Discount means the future buyer and seller think the market is going to go down. Now questions. Dhruv, it will be really happy that you start making money using this. That is when it will be really excellent, correct?
even if you stop losing money from earlier to your earlier setup to now, I am more than happy. At least if the setup is helping you to reduce your bad trades, that is the main goal. That's all. The main goal is to ensure that people make lesser and lesser bad trades. Can we get access to this setup? Uh, just give me a second.
I'm sorry, yeah, that is my close ex-boss, so I can never avoid his phone. Sir, one more question. After seeing the setup, instead of CE, PE by CE, sell PE, see more winning probability, sir. Both will be the same, no? Selling, because this is all intraday, number one. Number two, we are not holding, carrying forward. Selling, if you want to really start selling, you should start selling for the week more than intraday. First, you should learn how to sell this week expiry, where how to put. There, your theta decay overnight is your biggest profit element. Okay, not for like intraday buying. Intraday buying, even if a market opens flat in the same way tomorrow, you are going to lose. Correct. So selling, intraday selling, it makes money. I'm not saying it won't make money. More or less, you can replicate it with intraday buying. But selling means you should know, you should plan how you manage it for a week. Okay, so it is exactly 1 o'clock. I am done and dusted, and that was because of crude is getting weaker. Again, no air. It is made some. It is still staying within. See, this is what the setup is for intraday. 1 second, let me show you again. See here, from the morning, it has been staying within our yellow line, magic yellow line, and VWAP. Okay, this is VWAP. I think 1 second. Yeah. Okay, it is staying only within these two. Darshan, are you new to this channel? So this one, you can very clearly see each time it went up to VWAP, it started crashing. So it is VWAP keeps attracting, and also the yellow line is again tilting up. You can see very clearly in the crude, once it started to tilt down, crude went down. And now again, once it started to tilt up, it went and knocked at VWAP and coming. If once it crosses VWAP, for example, like here, see, you can see this thing. Once it is totally below VWAP, it went down. The second it crossed from this point, it went up to all this. Okay. Oh, you are first time. Where are you from, Darshan? Where are you from, Darshan? And how long you have been trading? Karnataka, super. Okay, that's it. I will attach one video here. I am just pinning it. Just have a look at it. Okay, that gives you almost 60% of what is being shown here. And join us. This is not a buy sell call channel. This is not buy sell call channel. You are not going to get buy this, sell that, and all. You have to trade on your own. That video will tell you that video will tell you how much is almost 60-70%. Join us by Monday, Tuesday, Wednesday. Again, we will have a session. I will join. I will keep. Let me know. Note down your name. I assume it is Darshan, correct? Name.
Wednesday will be 13th. Darshan, okay. 13th we will have the session, okay. So 2 days you will pick up more, and whatever the remaining doubts you can get it clarified on Wednesday, okay. You are welcome, Darshan. Okay guys, market is trying to go down below this day low. Once it starts making a body, clean red body below this, body of this candle goes below this line, continue to hold, then it can go all the way down, okay. It can go all the way down, but one thing, there will be one more support, because this is between S3 and S5, okay. Actually it went there and came up, so it should find support here, the second line, okay. Once it goes below this line, you can safely assume that market is going up to this point. Market is going up to this point, okay. Sir, I asked, what Prakash, sorry. One question I already answered, no. Whenever traffic light signal, we should alert for opposite trade or stop loss moving. Whenever traffic light signal, more or less, your see, once it moves, the momentum is not there. Automatically you will find it has already come to R1. Usually there won't be any trade at that point. If you are already carrying trade, you should stop loss, trail it closely and close. And the next question, for scalper, how much point is good to capture? 5 point with large lot size. Oh no, what you should do, Prakash, is first you should start with, let us assume where you are scalping. Tell me whether you are scalping Nifty, Bank Nifty, Sensex. Each has got a different ways to approach. Nifty, okay. Usually scalping offers a better opportunity on Bank Nifty and Nifty, I mean Sensex, okay. Bank Nifty people do, because scalping you need rapid movements intraday within next 3 or 4, maximum within 3 to 4 candles you should come out. You should be able to point out exactly where the breakout is happening and take it, or breakdown is happening next to 2 to 3 candles, and you should know very clearly where the resistance is up to that point. If it continues, you have to keep on adding, and then whenever you are entering, you should always enter the sale order also. For example, if it is now 254, let us assume this is what is the pivot point, and you want to enter. You should usually people do it in 2 or 3 tranches. If you want to do 1200 by 650, correct, sorry, 325, 325, 325, 975, what you will probably do, 375 here at 254, and as soon as you enter, you should know very clearly how much you are expecting, 262 or 264. You should immediately put a sale order of 325 for 262, and then if it crosses 251, you still feel strong that it is going to go up, really buy the next tranche in that. So in each tranche you keep picking up. In the first tranche will once the second one is going through, first will book the profit, that is fine. Then second and third, if the momentum is really strong, you take, and then wherever is the resistance point, you book. Now let us assume you are scalping now between this point, that is yellow line point, and this. You take a short position here in mid trade. Here this is not much time, correct. You got only
181 points to 151, 32 points. You may hardly get 5 or 6 points. You should be able to know how to calculate that and divide it in by 2 or 3. Got it? So there, booking the first lot profit, that is, let us assume you are buying it in 3 lots, 3 tranches. The first lot tranche you should immediately book whatever happens, even if it's very very strong momentum, blah blah blah. That sale order should let it, you should execute, bring down your costs dramatically. Okay, Prakash. Got it. Thanks guys, thanks for watching. Okay, have thanks for watching. Sorry, see you all on Monday. I am not closing here. I am only, commentary is only not there. The charts will be there. And I will give the details to assistant who will update. Okay. Take care.
बैंक निफ्टी का और एसबीआई का हाल। लेकिन आते हैं एक बार जरा मार्केट के मूड माहौल पर। एक बार फिर से फ्राइडे फैक्टर मार्केट पर थोड़ा सा हावी पड़ा और ट्रंप ने एक बार फिर हमारी रैली थोड़ी सी पंक्चर की। तेल ज़्यादा नहीं भागा, फिर भी बाज़ार गिरा। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है कि कच्चा तेल 100 पर ही है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये बाज़ार पर थोड़ा सा हावी पड़ा। और डॉलर के मुकाबले अगर आप देखें तो रुपया फिर थोड़ा सा कमज़ोर हुआ। बैंक निफ्टी ने आज इस गिरावट को लीड किया है और आज तो मिड कैप भी फिसले हैं थोड़ा सा हायर लेवल से, तो ये भी एक मार्केट के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। बाकी देखते हैं, बड़ा सवाल कि ये ट्रेंड रिवर्सल है या फिर मुनाफा वसूली है, ये तो समय ही बताएगा। श्रेया, राइट, आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है मार्केट में, उस पर नजर रहेंगे। और एसबीआई के नंबर आए, वो कोलैप्स हो रहा है और उसका असर सीधे तौर पर निफ्टी बैंक निफ्टी पर दोनों पर देखने को मिलेगा। आपको पूरा पीएसयू बैंक इंडेक्स रखेगा एक बार स्क्रीन पर 2.5% 2.25% की अब यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। थोड़ी बहुत बढ़त आज सिर्फ 2 ही स्पेसेस में हमने देखी, थोड़े बहुत आईटी और साथ ही एफएमसीजी पैक चला है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल उतना अच्छा नहीं लग रहा। जैसा कि आपने मेंशन किया, ऐसा क्रूड 100 के आसपास ये फिर भी नहीं चलना मार्केट का, ये किस ओर इशारा कर रहा है? जो आपने सवाल उठाया आखिर में, क्या ये ट्रेंड रिवर्सल है या फिर नॉर्मल मुनाफा वसूली, और अब क्या करना है इस बाजार में, कैसे नेविगेट करें? देखिए, सबसे पहले तो एसबीआई वापस देख लेते हैं। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये जो पीपीओपी है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, ये प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इसमें 16% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन है। आई थिंक ये मार्केट को पसंद नहीं आएगी। एक अच्छी चीज़ ये है कि एसबीआई चला ही नहीं था ज़्यादा, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गिरे ना, और एक वैल्यूएशन का कंफर्ट तो है ही यहाँ पर, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा गिरावट ना आए इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन अगर आप एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एसबीआई से आपको एक री रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा मार्केट के लिए, वो नहीं मिलेगा। इन नंबर्स पे नहीं मिलेगा। पिछले क्वार्टर के नंबर्स पे मिला था, इन नंबर्स पे नहीं मिलेगा। ये थोड़े से डिसअपॉइंटिंग नंबर हैं एसबीआई के। थोड़ा समझना पड़ेगा मैनेजमेंट से कि क्या हुआ इस क्वार्टर में। कुछ देर में मैनेजमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, उनसे भी समझेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो इस तरीके के नंबर्स एसबीआई लेकर आ गया। लेकिन दूसरी तरफ टाइटन देखिए आप श्रेया, और टाइटन में मुझे लग रहा था कि वो, क्योंकि टाइटन ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था रिजल्ट से पहले, वो ये देखिए किस तरीके से भागा है टाइटन। तो ऐसा नहीं है, मार्केट में दोनों तरफ के मूव्स है। और अभी भी देखिए टाइटन भी बड़ा स्टॉक है, ऐसा तो है नहीं कि कोई छोटा मोटा स्टॉक है। आई एम श्योर इसके वो जो मार्जिन है ना, इसलिए मैंने वो हेडलाइन में पढ़ा नहीं, वो कुछ ना कुछ गलती है उसमें, मुझे लग रहा है उसको हम सुधारेंगे। नहीं, इसको हटा दीजिए, ये कुछ तो गलती है इसमें, इसको हटा दीजिए प्लीज़। और ये उसमें कुछ गलती है, कुछ ना कुछ वन ऑफ्स हैं, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे, इस तरीके का नहीं वरना टाइटन के नंबर्स आ सकते थे। टाइटन के नंबर अच्छे हैं एक्चुअली, और इस वजह से टाइटन चल रहा है। अगर आप देखें तो 3% ऊपर है। तो एक तरफ है टाइटन, दोनों को पैरेलली रख दीजिए आप, एक तरफ है टाइटन, एक तरफ है एसबीआई, है ना। और ये आपको बता रहा है कि किस तरीके की मार्केट है। यहाँ पर अगर हल्का सा भी नंबर अच्छा है तो मार्केट आपको फुल्ली रिवॉर्ड कर रहा है, लेकिन हल्की सी भी डिसअपॉइंटमेंट की जगह नहीं है। हल्की सी भी डिसअपॉइंटमेंट पे स्टॉक इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो एक तरफ एसबीआई 5% नीचे, और एक तरफ आप टाइटन देखिए आप किस तरीके से लगातार भागी जा रहा है। इनफैक्ट वर्टिकल रैली आ रही है टाइटन में, करीब 3.5% ऊपर हो गया। मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा रहता कि उल्टा होता, या फिर एटलीस्ट एसबीआई भी इस तरीके से भागा होता। खैर नहीं भागा। खैर अब मैं आता हूँ आपके सवाल पर। देखिए, अभी ट्रेंड रिवर्सल कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। मेरे ख्याल से मार्केट को आप 1-2 दिन और देके देखेंगे। वैसे भी फ्राइडे को इस तरीके के मूव्स कई बार आए हैं मार्केट में, क्योंकि वीकेंड से पहले थोड़ा सा लोगों को डर होता है, थोड़ा सा लोग अपना प्रॉफिट भी बुक करना चाहते हैं। और बाजार गिरा है, टूटा नहीं है। एक मतलब ऑब्वियसली अगर आप बैंक निफ्टी में, तो आपको लग रहा हो कि नहीं यार बहुत ज़्यादा गिर गए। बैंक निफ्टी में मैं कहूँगा कि आज थोड़ी सी गिरावट जो है, वो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा हो गई, और काफ़ी हद तक जो बचा खुचा काम था वो एसबीआई ने कर दिया, आके सेंटिमेंट बिगाड़ने का। 1000 पॉइंट गिर गया, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी बैंक निफ्टी में, क्योंकि इस तरीके के ट्रिगर्स नहीं थे। लेकिन आई थिंक अगेन एसबीआई जो है वो बार बार मार्केट पर हावी हो रहा है। दिक्कत क्या है कि बैंक निफ्टी जो है ना, वो काफ़ी क्रूड सेंसिटिव हो गया है। मतलब तेल जहाँ जाएगा उसके हिसाब से काफ़ी सेंसिटिव हो गया है, और रैली या गिरावट दोनों को बैंक निफ्टी लीड कर रहा है। ये दिक्कत है इस समय मार्केट की। लेकिन शायद स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अभी भी शानदार है। अब मतलब मैं जैसे बार बार टाइटन का एग्जांपल दे रहा हूँ, देख लीजिए टाइटन किस तरीके से ऊपर भागा है और एकदम से डे हाई पर आया। तो ऐसा ये देखिए, ये तो रुक ही नहीं रहा है, 4.5% अब ऊपर आ गया है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहें, उसी में बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जैसे मैं कह रहा था कि आज की सुबह कल मुझसे भी थोड़ी गलती हुई। नॉर्मली हम एक टेम्पटेशन अवॉइड करते हैं कोई भी पोजीशन ओवरनाइट लेने के लिए, लेकिन कल एक व्यू ले लिया गया, वो थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट बैठा, तो ठीक है।
लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे मूव्स है मार्केट में। अगर आप निफ्टी पर अप्रोच देखेंगे तो देखिए 24,100 पर सपोर्ट है आपका, आज का लो करीब करीब 24,126 है, और रेजिस्टेंस रहेगी आपकी करीब करीब 24,300 से 350। पहले तो खैर 24,250 ही मुश्किल है, लेकिन फिर 24,300 से 24,350। आई थिंक बैंक निफ्टी में अब हम एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट पर हैं 55,000 से 55,200, क्योंकि वो 54,500 से जिस तरीके 56,000 की रैली हुई थी उसके बाद अगर वापस आप 54,500 पहुंच गए तो वो बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। तो इसके लिए मैं उम्मीद करूंगा कि ये 55,000 होल्ड कर ले, लेकिन अभी के लिए 55,000 से 55,200, और रेजिस्टेंस रहेगी आपकी करीब करीब 55,800 से 56,000 के करीब। वीरू के पास चलते हैं, आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा वो जान लेते हैं। अभी तो इनफैक्ट लास्ट के 5 मिनट तो डोमिनेटेड रहे होंगे एसबीआई और टाइटन से। वीरू, गुड आफ्टरनून। हाँ अनुज, डोमिनेट वो कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे साइड से निकल रहा हूँ, उनको नहीं छू रहा हूँ एसबीआई को। लेकिन दिक्कत की बात है कि एक स्टॉक जो मैं लेके आया था, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये बैंकिंग से ही है, लेकिन इसके स्टैट्स प्रभावित कर रहे हैं अनुज। एकला चलो जिसे कहते हैं ना, एक तो ये बैंक निफ्टी को आज सपोर्ट कर रहा था, एक तरफ जहाँ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई ड्रैगर्स थे, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइडर था। 1047 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ, स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स कन्विक्शन अगेंस्ट ऑल ऑड्स। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि क्रूड में थोड़ी सी जो मजबूती आई है, उसके बावजूद बैंकिंग जो कोलैप्स हुआ उसके बावजूद ये खड़ा हुआ है, तो अपने आप में क्यूट स्ट्रेंथ है यहाँ पे। प्लीज ओआई रखिएगा स्क्रीन पे। और लोअर स्ट्राइक से पुट राइटिंग करीब करीब 4.25 लाख शेयर का बिल्डअप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पहला। दूसरा मैंने रखा है दैट्स टाटा कंज्यूमर। एक बार टाटा कंज्यूमर का चार्ट स्क्रीन पे रखिएगा, अभी भी ये डे हाई पर है, 2% ऊपर है, नॉट मतलब डे हाई से थोड़ा सा नीचे है बल्कि। बट हो क्या रहा है, अब ये ऑलमोस्ट अपनी CY26 की फॉलिंग चैनल को बाइसेक्ट करने की तैयारी कर रहा है। 1180 लोअर स्ट्राइक्स पे, बिलो ऑल स्ट्राइक्स है 1150 से नीचे की। अच्छा पुट राइटिंग विजिबल है, 4.25 लाख शेयर बिल्डअप हुए हैं, और एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल का जो बाइसेक्ट है वो पॉसिबल लग रहा है इस स्टॉक पे। और तीसरा है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स भी अगर आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखें इस चार्ट को, तो लगभग दिसंबर 24 से चली आ रही इस पूरी फॉलिंग चैनल को ये बाइसेक्ट करता हुआ डे हाई पर 3066 पे एक बार ओआई रखिएगा, करीब करीब 0.12%, क्योंकि ये पहले एक शॉर्ट कवरिंग के फेज से बाहर निकल के आया है, एक क्लासिकल फ्लैग स्क्रीन पे है, तो ये प्रभावित करता हुआ ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बैंक्स में, टाटा कंज्यूमर एफएमसीजी में, और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। पर अनुज, मैं एसबीआई पे आऊँगा। अपना प्रश्न मैं इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे केंद्रित रखूंगा। एसबीआई के नंबर्स ईसीएल नॉर्म्स का एप्लीकेबल होना 1 अप्रैल 2027 से, और क्रूड का ये टफ रवैया, मतलब टफ इन द सेंस, मान लीजिए यहाँ से रिट्रेस 95 भी हो जाए, है ना, 60 के दिन लौटें, कहना मुश्किल है बहुत जल्दबाजी में। ऐसे में सडनली वो धड़ा बैंक्स में जिसके सहारे हमने वो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई का सफर तय किया था, सडनली वीक पड़ रहा है। पीएसयू बैंक्स पे टेक क्या बन रहा है अनुज एसबीआई के नंबर्स के बाद? अब बिल्कुल भी एक काम करते हैं, इस पर मैं अपना टेक दूंगा। इससे पहले हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, उनसे बात कर रहे हैं। एक्सेस सिक्योरिटीज़ के बीएफएसआई रिसर्च एनालिस्ट ज्ञानदा वैद्य हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्ञानदा जी, गुड आफ्टरनून। आपकी फर्स्ट कमेंट्री एसबीआई के नंबर्स पर, क्योंकि क्लियरली प्राइमा फेसी नंबर्स बिलो एक्सपेक्टेशंस लग रहे हैं। जी, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स बिलो एक्सपेक्टेशन है बोथ ऑन एनआईआई और पीपॉप। क्लियरली मार्जिन्स 3% को होल्ड नहीं कर पाए हैं, एंड दैट इज बिकॉज प्रॉब्ली यील्ड्स पे जो दिसंबर रेट कट का इम्पैक्ट था वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हुआ है। तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से अबाउट 19 बेसिस पॉइंट्स का एक ड्रॉप है मार्जिन्स में। तो वो एक वीक पॉइंट रहा। ऑन द क्रेडिट कॉस्ट फ्रंट प्रोविजंस काफ़ी कम आए हैं, जो अनुमान था उससे नियरली 40% लेस जो हमारे अनुमान थे उससे, जिसकी वजह से एक स्लाइट बीट है पैट पे। बट अदरवाइज ऑपरेटिंग लेवल या एनआईआई लेवल पे काफ़ी निराशाजनक रही। जी, तो ऐसे में ऑब्वियसली आप मैनेजमेंट कमेंट्री सुनना चाहेंगे, लेकिन क्या इन नंबर्स के बेसिस पर थोड़ा सा प्राइस टारगेट्स और रेटिंग्स कम होंगी क्या? जी, उस पे सो क्लियरली ग्रोथ तो इट हैज हेल्ड अप, क्योंकि 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, 17% है, तो वो एक बात रही। दूसरा, मैनेजमेंट कमेंट्री अगर ईसीएल का क्या इम्पैक्ट होगा ऑन मोर सस्टेनेबल बेसिस वो देखना पड़ेगा, जिसके चलते मे भी थोड़े रिविजन हो सकते हैं। और यहाँ से दूसरा रहेगा मॉनिटरेबल मार्जिन, अगर 3% के नीचे रहा है तो यहाँ से रिकवरी किस बेसिस पे आज आएगी, यहाँ से टू द 3 और 3.1% जो बैंक मेंटेन करता रहा है, ये 2 या 3 चीजें रहेंगी जो हम देखना चाहेंगे। बट फिलहाल तो बाय है हमारा स्टॉक पे। बट ज्ञानदा जी, एक बात, मैं भी अभी नंबर्स को देख ही रहा हूँ, बट सिंस इट्स अ मिस ऑन एनआईएम्स फ्रंट फॉर यू एज वेल, आपके लिए भी 19 बेसिस पॉइंट का डाइवर्जेंस है आपके अनुमान से, यानी ये ग्रोथ
लोअर मार्जिन ट्रेजेक्टरीज पे आ रही है, या आप इसको कहने में समर्थ हैं इस वक्त? और यहाँ से जिस प्रकार की कॉस्ट ऑफ फंड है, रिकवरी आगे थोड़ी सी मुश्किल लग रही है आपको एनआईएम्स की? जी यस ऑफ कोर्स पॉसिबली यहाँ से थोड़ा कॉर्पोरेट बुक में शायद ग्रोथ बेटर रही है या लोअर यील्डिंग में, ये डेफिनेटली हम कह सकते हैं। यहाँ से कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स का जो ट्रेजेक्टरी है, हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ से और सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होगा। मे बी मोर और लेस दीज लेवल्स और स्लाइटली हायर। तो मार्जिन रिकवरी टू 3% जी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मे बी अगर एक्सप्रेस क्रेडिट या थोड़े बेटर यील्डिंग सेगमेंट्स में अगर ग्रोथ आए तो वो थोड़ा सपोर्ट कर सकता है मार्जिन को। जी बिल्कुल, शुक्रिया ज्ञानदा जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू रखने के लिए सामने। तो ये खैर क्लियरली एसबीआई पर एक इम्पैक्ट करीब करीब 6% इस समय स्टॉक नीचे है। और वीरू, जैसा आपका जो सवाल था उसका जवाब दूं तो इन नंबर्स के बाद थोड़ा एसबीआई से अब अगले 2-3 महीने एक एक्सपेक्ट करना कि कुछ आउट परफॉर्मेंस होगी, थोड़ा सा टफ होगा अनलेस एंड अनटिल क्रूड पूरा कोलैप्स हो जाए, 70-80 के करीब आ जाए क्रूड। इन दैट केस वो एक एल्गो ट्रेड प्ले आउट होगी। लेकिन मेरी नज़र ना बार बार टाइटन पर जा रही है। टाइटन देखिए आप किस तरीके का स्टॉक है। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये टाइटन की सीरत रही है, नंबर से पहले करेक्ट होता है, नंबर्स के बाद ऑल टाइम हाई लगाता है। इसका जरा एक बार 6 महीने का चार्ट लेकर आइएगा टाइटन का, जिसमें आपको एक चीज़ थोड़ी सी क्लियर होगी। ये तो खैर 1 महीने का चार्ट है, देखिए करेक्ट हुआ था पिछले कुछ समय में। ये 6 महीने का चार्ट है। 45-50 वाला स्टॉक करेक्ट होकर 41 समथिंग तक 4150 तक आ गया था। और अब वापस मेरे ख्याल से ये आज या कल में शायद वापस ऑल टाइम हाई लगा दे। इसमें शायद कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऑल टाइम हाई लगा दे, मुझे कोई डाउट नहीं होगा। चलिए श्रेया आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे सर। आपने कहा स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स दे रहा है बाजार, टाइटन का भी अभी आपने जिक्र किया ऑलमोस्ट डेज हाई पर, और जैसा कि नोवामा, कोफोर्ज, सभी कोफोर्ज हमारे चार्ट जीपीटी में भी था, शानदार रिटर्न्स। तो अभी मार्केट में जहां पर स्ट्रेंथ है, आंकड़े जो प्रूफ दिखा रहे हैं, वहीं पर झुकाव होना चाहिए। बिल्कुल वहीं पर झुकाव होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं क्लियरली, इस मार्केट में आपको जिसे कहते हैं ना, दिस इज माय काइंड ऑफ मार्केट, मतलब ये बिल्कुल मेरे तरीके की मार्केट है जिसमें कि इंडेक्स पे पैसा कमाना बहुत टफ है, लेकिन स्टॉक्स में पैसा कमाना एक गेम है। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कोफोज का। कोफोज के उस दिन नंबर आए, हमने बात की थी कि हीरो ऑफ द डे होगा। उस दिन भागा करीब करीब 10%, कल नहीं भागा, कल थोड़ा सा फ्लैट रहा, आज फिर 6% भागा। तो अब डिपेंड करता है। और इसमें क्या होता है ना, आप अगर पहले 5% पे प्रॉफिट बुक कर लें, स्पेशली अगर आप कॉल ऑप्शंस में हो, आप पहले 5% प्रॉफिट बुक कर लें, तो जो असली प्रॉफिट होता है ना, उससे आप थोड़ा सा वंचित रह जाते हैं। तो इसीलिए इस मार्केट में ये ज़रूरी है कि आप क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं उसको देखकर एक व्यू लें। बाकी देखिए मार्केट, जैसा मैंने कहा कि इंडेक्स टफ है। अब देखिए क्या होता है ना, अब गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा हो आपको कि 150 पॉइंट नीचे है, तो उस दिन कहना, मतलब फ्रैंकली बोलूं, अरे उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जहाँ मार्केट खुला था मोरलेस वही है ना, कि 150 पॉइंट नीचे गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है हमको कि 150 पॉइंट नीचे खुला है। अब हम कोई ओपनिंग टिक की थोड़ा ना वेट करेंगे कि जिसमें पता होगा कि हमें पता है कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा। चलिए खैर, अब मैं आपको रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स बता देता हूँ। सबसे पहले रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में आएगा नोवामा। कैपिटल मार्केट थीम में ज़बरदस्त मोमेंटम, और सीएनबीसी आवाज़ पर लगातार इस थीम में पॉजिटिव व्यू लिया गया। कोफोज अच्छे नतीजों के बाद एक तरफा तेज़ी, और 2-3 दिन से इनफैक्ट कोफोज पर पॉजिटिव व्यू है। और एक सोनाटा सॉफ्टवेयर अच्छे नतीजों के बाद ज़बरदस्त रैली आई यहाँ पर। अब आते हैं हम आज के फिसड्डी स्टॉक्स में। सबसे पहले ब्रिटानिया खराब नतीजों से गिरा सुबह, एक्सीडेंट ऑफ द डे, इसकी भी हमने आशंका जताई थी कि ये हो सकता है। लुपिन के नतीजे ठीक ठाक थे, लेकिन हमने कॉशियस व्यू इसलिए लिया था क्योंकि उनकी थोड़ी सी कमेंट्री नेगेटिव थी, इस वजह से अच्छे नंबर्स पर भी थोड़ा सा कॉशियस व्यू इसीलिए लिया गया था। इसके लिए इसको ग्रीन में नहीं लिया था हमने। ब्लू स्टार ये नतीजों के बाद लगातार गिरा, और सुबह हमने चार्ट जीपीटी में डिस्कस भी किया था एज वीक स्टॉक। चलिए श्रेया, आप क्विकली कार्यक्रम समझ लेते हैं और फिर आगे कॉल्स ले लेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं और शो फ्लो समझाती हूँ आपको क्या क्या होगा इस शो में। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगी इनफैक्ट एमओएफएसएल के सिद्धार्थ खेमका जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम मानस जायसवाल, कविता जैन, अरुण कुमार मंत्री, पंकज आंध्र, शिल्पा राउत और सौम्य मेहता जी से। 2:20 पर आशीष बताएंगे आपको कि डाबर क्यों बना है आज का हीरो ऑफ द डे, और ब्रिटानिया क्यों बना एक्सीडेंट ऑफ द डे। आशीष सही समझेंगे। 2:30 बजे आशीष चतुर्वेदी से बात करेंगे कैश
सेगमेंट में उन शेयरों की जिनमें आज नतीजों के बाद तूफानी तेजी देखी गई। 2:35 पर मैं बताऊंगी कि पेंट शेयरों पर आज तेजी क्यों है। साथ ही 2:45 पर सोमवार को आने वाले नतीजों पर आशीष बताएंगे आपको कैनरा बैंक और इंडियन होटल के नतीजों का अनुमान। साथ ही कंचन से समझेंगे यूपीएल के नतीजे कैसे रह सकते हैं। 2:55 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे से जोड़ेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के सीईओ नवीन कुलकर्णी जी। 3:10 पर अनुज से स्ट्रैटेजी सोमवार के लिए। 3:15 पर डीलिंग रूम चेक और 3:20 पर होगा बीटीएसटी या एसटीबीटी कॉल। साथ ही आखिर में 3:25 पर कंचन लेकर आएंगे अगले हफ्ते के ट्रिगर्स। ओके चलिए अब हमारा पैनल तैयार है, शुरुआत करेंगे। आप सभी को गुड आफ्टरनून। ओके अच्छा आज का बसर है नहीं तो शुरुआत करते हैं मानस जी से। मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए कोलगेट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कोलगेट लगातार 200 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन अभी कुछ देर पहले स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। करंट लेवल्स पे आप कोलगेट में खरीदारी कर सकते हैं। 2169 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 2250 के टारगेट सेट करने हैं। अगर चाहें तो 2200 वाला कॉल ऑप्शन जो 50 रुपए पे ट्रेड हो रहा है उसमें 39 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें और 70 रुपए के टारगेट सेट करें। ओके कोलगेट आपकी कॉल है 2195 में। मीनवाइल जो अनुज बात कर रहे थे कि टाइटन का ऑल टाइम हाई लग गया है ना। इसका ऑल टाइम हाई था 54, लगभग 4554, अभी 4564 का हाई लगाया, तो ऑल टाइम हाई लग गया। 16 अप्रैल 26 का स्विंग हाई काट दिया। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपका कॉल। गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो एफएमसीजी से ही होगा और ये लिटिल पोजिशनल सेटअप इज गुड ऑन नेस्ले। काफी टाइम से ये स्टॉक एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। मुझे लगता है 1520 1550 इसके टारगेट अभी ड्यू दिखते हैं। एक अच्छे करेक्शन के बाद अभी 1484 पर काउंटर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ये मौजूदा भाव से आप इसमें पोजीशनिंग कर सकते हैं। 1475 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशन करें फॉर द प्राइस ऑफ 1500 1520। ठीक है, दो ट्रेड्स आए बाई साइड के और दोनों ही एफएमसीजी पैक से आया है, कोलगेट और नेस्ले। पंकज जी गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सा स्टॉक चुन रहे हैं आज आप। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, अनुज सर, वीरेंद्र जैन, ऑल को पैनलिस्ट। मैम मैं सेल साइड के साथ में जाना चाहूंगा। भारत फोर्ज के फ्यूचर्स में बिकवाली की सलाह रहेगी। किनसाइड बार का एक ब्रेकडाउन यहाँ पर बहुत शार्प डिक्लाइन देखने मिला है। मुझे लगता है कि वीकनेस और भी ज्यादा परसिस्ट हो सकती है यहाँ पर। तो 2000 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना होगा। लोअर लेवल पर मुझे लगता है कि 1650 रुपए तक के रेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अरुण जी के पास। अरुण जी गुड आफ्टरनून। मीनवाइल एसबीआई का स्लिपेज नंबर भी खराब आया है। देखिए 4458 करोड़ से बढ़कर 5521 करोड़ पर आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हर पैमाने पर खराब नंबर हैं और 7% अब ये स्टॉक नीचे हो चुका है। जी हाँ 7%। ये जो स्लिपेज का नंबर है, ये स्लिपेज का नंबर ये आखिरी नंबर होता है जो मार्केट वेट कर रहा होता है, और फ्रेश स्लिपेज का नंबर। और इस फ्रेश स्लिपेज के नंबर से जो कि 4458 करोड़ से बढ़कर 5521 करोड़ पर आया है, उसकी वजह से अब आप एक फ्रेश इम्पैक्ट देख रहे हैं स्टॉक पर। और 7% नीचे, मुझे याद नहीं लास्ट टाइम कब एसबीआई 7% नीचे आया था नंबर्स पर। 7% ऊपर वाले मुझे 3-4 इंस्टेंसेस याद है, लेकिन 7% नीचे आया। और ये एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि इस तरीके का मूव एसबीआई ने पिछले कई समय से नहीं दिखाया है। कई समय से एसबीआई नंबर्स पर आउट परफॉर्म करता आया है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ इस क्वार्टर में। अभी कुछ देर में नूपुर जाएंगे मैनेजमेंट से बात करने के लिए, तो पता करेंगे भाई ऐसा हो गया जो इस तरीके की डिसअपॉइंटमेंट आपने दे दी। खासतौर से अब ये स्लिपेज का नंबर भी, ये तो सर्किट की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके से स्टॉक 7.5% अब नीचे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अरुण जी बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अरुण सर। ट्यूब इन्वेस्टमेंट के साथ जाना चाहूंगा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। कल का हाई भी स्टॉक ने क्रॉस किया है। 3052 के आसपास है, तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट को खरीदे। 3020 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3112 तक के टारगेट। अरुण जी की कॉल ट्यूब इन्वेस्टमेंट जिसका जिक्र मैं कुछ देर पहले कर रहा था, बहुत ही अच्छा प्राइस पैटर्न यहाँ पे इसका, और लॉन्ग ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा लॉन्ग नाइका पे। नाइका ने अभी एक अच्छा खासा वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया हुआ है। मुझे लगता है 267 के स्टॉप लॉस से आप इसमें लॉन्ग बने रह सकते हैं। पहला टारगेट 278 का रहेगा, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 285 पे इसके नेक्स्ट टारगेट से सकते हैं। नायका शिल्पा जी को पसंद आ रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर। सोमिल जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड बताएं।
गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी ट्रेड होगी अगेन एफएमसीजी से ही। एचयूएल में कुछ समय पहले एक ब्रेकआउट मिला था एंडिंग डायगोनल से। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी एक ब्रेकआउट मिला था ऑन द डेली चार्ट्स। अभी लास्ट 2 हफ्तों से एक कंसोलिडेशन चल रहा है बिटवीन 10 डेली मूविंग एवरेज एंड 20-40 डेली मूविंग एवरेज। तो ये पूरा कंसोलिडेशन मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ टूटेगा। प्रीटी पॉजिटिव ऑन दिस। टारगेट रहेगा 2400 और स्टॉप लॉस रहेगा 2240। एफएमसीजी एज अ पैक आज ठीक ठाक करता हुआ, थोड़ी बहुत खरीदारी हमें आईटी स्पेस में दिख रही है। इनफैक्ट आईटी स्पेस अब तो 1% ऊपर। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, फटाफट से एक रिकैप फिर इन्वेस्टमेंट आइडिया भी लेंगे। मानस जी ने शुरुआत की कोलगेट के साथ और 2250 के टारगेट देख रहे हैं वो। 2169 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। कविता जी भी एफएमसीजी पैक से ही जा रही है नेस्ले के साथ और 1550 के टारगेट नेस्ले में, 1475 का स्टॉप लॉस लगाना है। पंकज जी ने भारत फोर्ड चुना है। आज थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, कल आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली थी आफ्टर मैनेजमेंट कमेंट्री। 1650 नीचे के टारगेट है, 2000 का स्टॉप लॉस लगाइए। अरुण जी ट्यूब इन्वेस्टमेंट के साथ जा रहे हैं, कल भी अच्छी परफॉर्मेंस और आज भी फॉलो बाइंग होती हुई नजर आई है। 3120 के टारगेट है, 3020 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। शिल्पा जी कह रही हैं कि नायका के साथ जाएंगे। अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमने इस पर्टिकुलर काउंटर में देखी है पिछले कुछ सत्रों से। 280 285 के टारगेट के लिए चेज कीजिए, 257 का स्टॉप लॉस। और आखिर में सोमिल जी ने एचयूएल चुना, हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी पैक से, जहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। आज के सेशन में ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास ही कामकाज करता हुआ ये काउंटर आपको नजर आएगा। अब आपका इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो ये समझ लेते हैं। सिद्धार्थ खेमका जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, माफ कीजिए, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा। धन्यवाद, नमस्कार आपको और सभी बाकी पैनलिस्ट को, दर्शकों को भी। तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट आइडिया है वो वारी एनर्जीज है। हाल में कंपनी ने अपना एक एनालिस्ट डे रखा था जहां पर वारी 2.0 के तहत कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव बिजनेस प्लान बताया है। जो हमें लगता है कि वारी अब जो है ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम अ प्योर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर से अब वो टारगेट कर रहा है फुल्ली इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हुए। तो उसके तहत जो कंपनी ने टारगेट रखे हैं वो एग्रेसिवली बिल्ड कर रहा है एक इंटीग्रेटेड एनर्जी इकोसिस्टम, जिसमें जो प्लांट कैपेसिटीज है 28 गीगावाट ऑफ मॉड्यूल्स, 15 गीगावाट ऑफ सेल्स, 10 गीगावाट ऑफ इनगॉट वेफर्स एंड फाइनली 20 गीगावाट आवर ऑफ जो बीईएसएस जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशंस है अगले 3 से 4 सालों में FY28 टू FY30 के तहत। और इसके तहत जो कंपनी ने अपना एक रेवेन्यू टारगेट रखा है वो ऑलमोस्ट एक एग्रेसिव 4 टाइम्स अपना रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ाकर बढ़ने की बात कही है बाय FY2030। तो ओवरऑल जो कंपनी है वो बोल रही है कि इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी अपॉर्चुनिटी है वो काफी स्ट्रांग है। जो इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है वो 150 गीगावाट जो अभी करेंटली है से बढ़कर 400 गीगावाट तक जाएगी, जहां पर बैटरी स्टोरेज डिमांड जो है वो काफी एक्सपैंड होगा। उसके बिना ये सोलर एक्सपेंशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा एंड इसी के तहत कंपनी ने एक अपना एग्रेसिव प्लान बनाया है। वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, स्ट्रॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है वो हमें काफी अच्छी लगती है। और वैल्यूएशंस भी अगर आप देखें इस स्पेस में जो ग्लोबल एनवायरनमेंट की वजह से थोड़ा बहुत स्टॉक करेक्ट भी हुआ था, तो बाय कीजिए वारी एनर्जीज विद अ 1 ईयर टारगेट प्राइस ऑफ 3850। हमें लगता है कि यहाँ से 20% अपसाइड देखने को मिलेगा। ओके, वारी एनर्जीज ये पसंद आ रहा है और अच्छी स्ट्रेंथ है यहाँ पर। लेकिन एक बार निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर। 174 अंक नीचे। अब क्लियरली हमने इंट्राडे लो जो है 24126 का छुआ है सर। और एसबीआई का जो नतीजे रिजल्ट आया उसका क्लियरली प्रेशर देखने को मिल रहा है मार्केट पर। क्या सेंस बन रही है जो सर जिस तरीके से टूट रहा है मार्केट, और 2 दिन का वीकेंड है, फिर सोमवार को हम आएंगे, कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए श्रेया, थोड़ा सा नंबर एसबीआई का काफ़ी ख़राब है एक्चुअली। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 3 के नीचे आ गया है क्वार्टर उसमें भी बड़ा डिप है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। 2.9 समथिंग में देख रहा था नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर क्लियरली प्ले आउट हो रहा है। तो वो आई थिंक लास्ट एक नंबर था जो प्ले आउट हुआ था, नेट इंटरेस्ट मार्जिन वाला नंबर रख दीजिए एक बार। हाँ, ये 2.93 वाला आई थिंक उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर प्ले आउट हुआ है। देखिए टफ है मार्केट, लेकिन मैं अभी भी एक बात कहूँगा कि ब्रॉडर मार्केट ठीक ठाक है। जब तक ब्रॉडर मार्केट ख़राब ना हो, एडवांस डिक्लाइन ख़राब ना हो, तब तक ये बाइंग अपॉर्चुनिटी ही है। और सपोज करिए वीकेंड पे कुछ पॉजिटिव खबर आ जाए, ट्रम्प फिर कुछ ऐसा बोल दें, मंडे को आप 95 करोड़ पे खुलें, तो फिर क्या होगा?
तो इसके लिए अगर आपने लॉन्ग लिया है तो थोड़ा वेट करें, देखें इसको पेशेंटली और फिर टेस्ट करेंगे। एक बार पैनल को रखिएगा जरा, एक बार मैं SBI पर एक व्यू लेना चाह रहा था। सिद्धार्थ जी, गुड आफ्टरनून। SBI पर क्या व्यू रहेगा आपका? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। देखिए, अब ये नतीजे आए हैं और जैसा आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, कंसिस्टेंटली ये कंपनी आउट परफॉर्म कर रही थी इन डिलीवरी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने अपना ग्रोथ गाइडेंस भी बढ़ाया। तो अब ये थोड़ा सा एनालिस्ट कॉल में समझना पड़ेगा कि ये वन क्वार्टर इम्पैक्ट है या ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है जो आगे चलकर व्यू को चेंज करता है। इसके सामने अगर आप देखें तो जो अदर बैंक्स हैं जहां पर अच्छे नतीजे आए हैं, आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एनवायरनमेंट में स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो काफी अच्छे नतीजे दे रहे हैं, वैल्यूएशंस भी कंफर्टेबल है और ग्रोथ भी हमें लगता है कि काफी स्ट्रांग रहेगा। तो कंपनीज लाइक फेडरल बैंक, RBL, बंधन, मुझे लगता है कि इस एनवायरनमेंट में इन बैंक्स पर फोकस होना चाहिए। लार्ज बैंक्स में हमारा प्रिफर्ड पिक ICICI, SBI हुआ करता था, लेकिन अब ये थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा बिकॉज नतीजे डेफिनेटली वीक आए हैं और जैसा आपने भी बताया स्लिपेजेस भी थोड़े से बढ़कर आए हैं। तो क्लियरली वेदर दिस इज अ वन टाइम इम्पैक्ट की ये थोड़ा स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट है, अगले 2-3 क्वार्टर्स में इम्पैक्ट करेगा, वो देखना जरूरी है। SBI डे लो पर 1018 पे पिछले 10 मिनटों से हालांकि 1012, 13, 14, 15 पे स्थिर हो रहा है। अभी आते हैं कुछ देर में इसके ऑप्शन स्टैट्स को भी देखेंगे और याद रखिएगा 1000 जो है वो SBI का गढ़ है इस मंथ का, मई का। मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, क्योंकि 1000 पे ही इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा करीब 6227 पुट का कंसंट्रेशन है और लगभग 992 पे इसका 200 डेमा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण। अनुज, SBI बातों में मैं देखा था कहाँ आज सफर की शुरुआत की थी हमने 1090 से, है 200 डेमा का जोन आ गया, सबसे बड़े पुट राइटर्स का जोन आ गया, है ना? ये मार्केट में ना, मार्केट डजंट केयर आप SBI हैं या आप कोई भी हैं, अगर नंबर अच्छे नहीं हैं तो पनिशमेंट मिलेगी। मतलब फिल्म बेकार हो तो सुपरस्टार की भी फिल्में फ्लॉप होती है ना, तो मतलब नंबर अच्छे आएंगे तभी स्टॉक चलेंगे, ये सिंपल मार्केट का रूल है। और नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए SBI में इस तरीके मूव आ रहा है। लेकिन 1000 पे थोड़ा सपोर्ट है, 1000 पे थोड़ा सपोर्ट है SBI का। और जो रिसेंट लो थे वो करीब करीब 980 के थे। दिक्कत क्या आएगी कि मुझे लग रहा है इन नंबर्स के बेसिस पर, अनलेस मैनेजमेंट के पास कोई क्लैरिफिकेशन हो, अभी कुछ देर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद, अनलेस मैनेजमेंट के पास कोई क्लैरिफिकेशन हो, इन नंबर्स के बेसिस पर कल थोड़े से डाउनग्रेड्स आएंगे, तो वो थोड़ा सा एक इम्पैक्ट पॉसिबल है SBI का। लेकिन देखिए, हमको ना दोनों तरफ की बातें करनी चाहिए। टाइटन देखिए दूसरी तरफ, क्या रुक ही नहीं रहा है टाइटन, और क्या ज़बरदस्त SBI ने अभी भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपलोड की है, देखते हैं उसमें क्या कह रहे हैं वो। लेकिन टाइटन 4% ऊपर। चलिए अब बात करते हैं आज 2 FMCG स्टॉक्स की, एक है डाबर और एक है ब्रिटानिया। डाबर में एक अच्छा रिएक्शन आया, ब्रिटानिया में ख़राब रिएक्शन आया। तो देखते हैं, डाबर 4% ऊपर है, ब्रिटानिया 5% नीचे है। सुबह यही व्यू इस चैनल पर लिया गया था कि डाबर चलेगा, ब्रिटानिया गिरेगा, और ओपनिंग के बाद नहीं, जब जिसमें दिख गया था कि 5% नीचे खुला है ब्रिटानिया ना, उसके बाद नहीं, पहले बताया गया था आपको ये। चलिए आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं कि इन दोनों स्टॉक्स में इस तरीके के मूव्स क्यों आए। आशीष बताइए। बिल्कुल सर, बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं और एक ही सेक्टर की कंपनी है लेकिन बिल्कुल विपरीत रिएक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। डाबर 4% ऊपर, ब्रिटानिया तकरीबन 5% नीचे। शुरुआत से लेकर अगर आप देखें तो ज़बरदस्त एक्शन है। इनफैक्ट डाबर के मूव्स तो आप देखें तो काफ़ी हद तक स्क्रीन पर ही सामने होते हुए नजर आए। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ब्रिटानिया स्टॉक में आपको क्यों गिरावट और क्यों निराशा यहाँ पर देखने को मिली। चलिए पहले काम करता हूँ, आपको डाबर बता देता हूँ। डाबर में क्यों एक्शन आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। 6% की वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि 18 तिमाहियों में सबसे बेहतर है। 18 तिमाहियों में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। इनका होम और पर्सनल केयर सेगमेंट, इसमें 17% की ग्रोथ देखने को मिली है। हेयर ऑयल कारोबार में 20% की ग्रोथ है और इसमें जो वॉल्यूम ग्रोथ निकल कर आई है ये 14% की है। लेकिन खास बात है कि यहाँ पर 9% प्राइसिंग का भी जो है बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिला। अब डाबर हनी की बिक्री देखें तो तकरीबन 20% की ग्रोथ है और हाजमोला भी बहुत ज़्यादा बिकी है, तकरीबन 13% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। ओरल केयर सेगमेंट में मैनेजमेंट ये बता रहा है कि कुछ मार्केट शेयर के गेंस भी देखने को मिले। लेकिन जब CNBC आवाज़ से इन्होंने बात की मैनेजमेंट ने, तो उसके बाद से देखें तो स्टॉक में और बड़ी एक्शन देखने को मिला, क्योंकि मैनेजमेंट ये कह रहा है कि इस तिमाही में अगर आप देखें तो मार्जिन जो थोड़े से बढ़कर आए हैं वो प्राइस हाइक का नतीजा है। अब Q1 में सेकेंड राउंड ऑफ प्राइस हाइक आपको देखने को मिलेगी। ये बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में
जो इनका टोटल इंटरनेशनल कारोबार है उसका मिडिल ईस्ट तकरीबन 20% है, लेकिन बाकी की सारी ज्योग्राफीज़ में ग्रोथ बहुत शानदार देखने को मिल रही है। तो इस तिमाही में मिडिल ईस्ट का इम्पैक्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट अब सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर देखने को मिल रही है। लेकिन डाबर पर हमने देखा है खासतौर पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जेफरीज की भी कवरेज काफ़ी बढ़िया रही है। स्टॉक की वैल्यूएशन आप देखें तो अट्रैक्टिव लग रही है, क्योंकि FY27 पर देखें तो 38 टाइम्स पर है और FY28 के हिसाब से देखें तो 34 टाइम्स पर है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में आपको खास एक्शन नजर आया। अब बात कर लेते हैं आज के एक्सीडेंट की, और एक्सीडेंट के लिहाज से आप देखें तो ब्रिटानिया इस स्टॉक ने थोड़ा सा निराश किया है। अब अनुमान से कमजोर नतीजे यहाँ पर देखने को मिले हैं। आय में गिरावट देखने को मिली है, सिर्फ 7% की ग्रोथ है, जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। अच्छा, मुनाफे का आंकड़ा जो आपको थोड़ा सा बेहतर साइड पर देखने को मिलेगा, इसके पीछे का कारण यह है कि इस बार जो टैक्स का आंकड़ा है ये थोड़ा सा आपको कम देखने को मिला। जो 25.5% के आसपास था वो 13.5 के करीब देखने को मिला। और साथ में ये भी बताने कि जो पश्चिम एशिया में तनाव है इसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एबिटा मार्जिन में थोड़ी सी निराशाजनक ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन कंपनी ये भी कह रही कि Q1 से ये भी प्राइस हाइक करेंगे। इसी के चलते अगर आप देखें तो इन दोनों स्टॉक्स में खास एक्शन है। ओके, तो ये हमने दो कहानी सुनी FMCG की आशीष की जुबानी। ब्रिटानिया आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, वही डाबर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, 4% ऊपर है। SBI की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है, एक बार उस पर कट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। Sir, to please address the media and present a comprehensive overview of SBI's financial performance for the quarter 4 financial year 26. Over to you, Chairman, sir. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for joining us today following the announcement of our Q4 and full year FY26 results. At the outset, I extend a warm welcome to our colleagues from the media and my fellow members of the SBI family. ओके, चलिए अभी थोड़ा सा वो एक बेसिक्स बता रहे हैं, जब डिटेल में आएंगे तब इस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन श्रेया, कैश मार्केट कॉल से लेते हैं। हाँ, कैश कॉल्स लेना शुरू करते हैं सर। और मानस जी, सोमित जी और कविता जी से हम कैश कॉल्स लेंगे। तो मानस जी बताइए, कैश में कौन सा काउंटर पिक कर रहे हैं आप? देखिए, कैश में त्रिवेणी टरबाइन में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर त्रिवेणी टरबाइन में देखें तो आप यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, 600 पे ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 584 का लगाना है और 630 रुपए की टारगेट सेट करना है। ओके, त्रिवेणी टरबाइन 600 पे आपका बाय कॉल। सौमिल, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा श्याम मेटल्स पर। श्याम मेटल्स में यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। अगेन आज के ट्रेडिंग सेशन में 10 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से एक अच्छा मोमेंटम शुरू हुआ है। 200 डेली 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी टूटी है ऊपर की तरफ ऑन द वीकली चार्ट्स, तो बड़े टाइम फ्रेम में भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 878 का और ऊपर में टारगेट होगा 1000 रुपए पर। ओके, कविता जी आपने क्या पिक किया कैश में? सो अनुज जी, कैश में ओलेक्ट्रा ग्रीन का सेटअप काफी अच्छा है। अगर आप देखें वीकली चार्ट पर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है काउंटर ने विद वेरी गुड वॉल्यूम। लिटिल पोजिशनल सेटअप डिस्कस करेंगे। 1350 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है, अंटिल काउंटर 1280 के लेवल के ऊपर मेंटेन है, यहाँ पर आप पोजिशनिंग कर सकते हैं। फॉर मल्टीपल डेज मुझे लगता है 1420 के टारगेट आने चाहिए, और अगर मल्टीपल वीक्स आप रख सकते हैं तो 1520 तक के प्राइस मूव पॉसिबल है। With a stop loss of 1280, one should approach on the counter. And as a disclaimer, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है। चलिए, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में अच्छे मूव्स हैं इस समय। अच्छा, एक बार शिल्पा जी आपसे एक व्यू लेना चाहूँगा मैं। आपकी कॉल वैसे नायका पर थी, लेकिन एक ये इटर्नल, अगर आपने इसको देखा हो पिछले कुछ दिनों में थोड़ा कमजोर हुआ है, इस पर क्या व्यू रहेगा चार्ट पे? जी बिल्कुल अनुज, इंटरनल पे 240 के जोन पे एक अच्छा सपोर्ट है। वहां से टाइम एंड अगेन हमने देखा है एक छोटा सा बाउंस आता है, बट 265 टू 70 पे रेजिस्टेंस भी है। तो आइदर साइड ऑफ द रेंज इसको ब्रेक करना पड़ेगा कोई डिसाइसिव मूव पे। ओके, मीनवाइल एक बार निफ्टी लेकर आइए जरा आप एक बार इंट्राडे में, और निफ्टी में अच्छी रिकवरी आ रही है श्रेया, ये देखिए, और मज़ा आएगा। अब अगर हम डे हाई पर आ गए और अगर किसी तरीके से डे हाई निकाल दिया, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आपने डे हाई निकाल दिया
तो मजा आएगा फिर निफ्टी दैट पर। विल बी सरप्राइजिंग ना। नहीं, सरप्राइजिंग तो कुछ भी नहीं होता मार्केट में, सरप्राइजिंग कुछ नहीं होता, सरप्राइजिंग कुछ नहीं होता। और देखिए क्या होता है ना, सरप्राइज अभी आप गिफ्ट निफ्टी देखकर अगर आप एक व्यू दे दें, या फिर मार्केट में खुल जाने के बाद पूरा रिएक्शन हो जाने के बाद आप उसके बाद, जैसे ब्रिटानिया का मैं एग्जांपल देता हूँ, है ना, ब्रिटानिया का इंटरडे चार्ट देख लीजिए, है ना। मतलब आई फाइंड इट वेरी फनी, क्योंकि मतलब आप 8:30 बजे व्यू लें कि नहीं स्टॉक नहीं गिरेगा क्योंकि वो प्राइस में है, लेकिन जब गिर जाए तो उसके बाद बोले कि देखिए गिर गया स्टॉक। ये मतलब जो जैसे होता है ना, इससे व्यूअर को क्या फ़ायदा होता है ना। कभी तो इंसान को कहीं तो एक ये होनी चाहिए ना, एक कुछ ना कुछ कि भाई ठीक है, हम किसी स्टॉक पर अगर बात कर रहे हैं तो सरप्राइजिंग कुछ नहीं होता मार्केट में। मार्केट सुप्रीम है। एक चीज़ समझ लीजिए, आपके या मेरे व्यू लेने से या हमारे कहने से हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं मार्केट के ऊपर, मैक्सिमम एक चीज़ कह सकते हैं कि चलिए ये हो सकता है मार्केट में। उसके बाद इवेंचुअली मार्केट ने वही करना है जो मार्केट ने डिसाइड करना है। तो अब देखिए मिड कैप वापस ग्रीन में आ गया है, और निफ्टी जिस तरीके से रिकवरी दिखा रहा है, इवन बैंक निफ्टी भी रिकवरी दिखा रहा है। बैंक निफ्टी भी देखिए अब किस तरीके से वापस कोशिश कर रहा है। ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट आ गई बैंक निफ्टी में, निफ्टी एसबीआई की वजह से। इवन एसबीआई भी रिकवरी दिखा रहा है एक्चुअली, डेज लो से 1000 का लो था, 1000 के लो से वहाँ भी अच्छी रिकवरी है। और निफ्टी अब बस मैं वेट कर रहा हूँ, एक बार 24,250 के ऊपर निकले अगर तो मज़ा आ जाए। क्रूड भी आप देखें तो वापस 100 के नीचे आने की तैयारी कर रहा है, 100.2 पर आ गया है। और इसीलिए एक दिन के मूव से ना ट्रेंड नहीं बदलते, ट्रेंड मार्केट में पॉजिटिव है, और इसीलिए मैं अभी भी इस मार्केट पे नेगेटिव नहीं हूँ। बाकी देखेंगे आज की क्लोजिंग किस तरीके से होती है। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी, और 24,250 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो पॉजिटिविटी आएगी मार्केट में। अभी फिलहाल थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस सिर्फ टाइटन की वजह से इन ग्रीन आ गया, वरना सारे स्टॉक्स यहाँ पर रेड आपको दिखेंगे। टाइटन एक बार फिर दोबारा लेकर आएगा स्क्रीन पर, और 6.5% की तेजी टाइटन में आफ्टर रिजल्ट। गजब का दौड़ रहा है ये स्टॉक, फिर से लाइफ टाइम हाई पर आ चुका है, लेकिन 6.5% का मूव, क्या इसे चेज करना चाहिए? इसके बाद भी समझ लेते हैं अरुण जी से। अरुण जी, टाइटन काफी बार डिस्कस किया हमने, ये काउंटर आपको पसंद भी है, लेकिन जिस तरीके से मूव आए हैं आज के सेशन में, जो फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं, क्या वो थोड़ा वेट करें या इन लेवल्स पर लगता है आपको मंडे भी जब खुलेगा तो टाइटन ऐसे ही मूव दिखाएगा? देखिए बिल्कुल पॉजिटिव मूव ही रहना चाहिए। 45-70 के आसपास चल रहा है अपना ऑल टाइम हाई स्टॉक ने टेस्ट किया, तो डेफिनेटली मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए। इनफैक्ट 4 दिन से लगातार शॉर्ट हो रहे हैं और शॉर्ट कवरिंग क्लियर स्क्रीन पे भी नजर आ रही है। इसको चेस करके भी चल सकते हैं, थोड़ा मामूली गिरावट मिलती है, 4550 के नीचे मिलता है, तो डेफिनेटली इसको लेके जाना चाहिए। मुझे लग रहा है मंडे के सेशन में अगर सब कुछ स्टेबल रहता है तो 4650 4680 तक के भी लेवल आ सकते हैं। एक शॉर्ट कवरिंग वाला परफेक्ट कैंडिडेट स्टॉक हो सकता है। मुझे लग रहा है डेफिनेटली स्टॉक को चेस करके चलना चाहिए। ओके, टाइटन 4574। मीनवाइल निफ्टी में रिकवरी, निफ्टी बैंक में रिकवरी, और निफ्टी आईटी करीब करीब अगर आप समझिए कि इस वक्त डे लो की तरफ प्रोसीड, सॉरी डे हाई की तरफ प्रोसीड करता हुआ बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो निफ्टी आईटी में अच्छा करते हुए। कोफोर्ज की बात हो गई, परसिस्टेंट की बात हो गई। मानस, ये जो निफ्टी आईटी का रिवर्सल है, इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? और परसिस्टेंट या फिर एलटीआईएम, या फिर इस वक्त मेरे स्क्रीन पे एचएल टेक्नोलॉजीज में पिछले 20 मिनटों में काफ़ी बाइंग इमर्ज हुई है, आपका झुकाव सिर्फ एक रिवर्सल के लिए? बिल्कुल, देखिए कुछ स्टॉक आईटी के डेफिनेटली अच्छे लग रहे हैं। अगर एक ही स्टॉक मेरे को पिक करना है तो वो डेफिनेटली कोफोर्ज होगा। कोफोर्ज में हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है, स्टॉक अपने 52 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, और मेरा समझना है कि स्टॉक 1500 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो एक पोजीशन ट्रेड करंट लेवल्स पे भी ले सकते हैं, 1309 के स्टॉप लॉस से पोजीशन ट्रेड लें, और 1500 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एलटीएम में भी खरीदारी की जा सकती है। ऐसा लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, तो एक बाउंस बैक प्ले बनता है। 4300 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे, 4550 तक के टारगेट्स पास होंगे। ओके, कोफोर्ज साथ ही एलटीएम, और पूरा आईटी स्पेस एक बार रखिएगा स्क्रीन पर। 1% अब आपको आईटी इंडेक्स कारोबार करता हुआ नजर आएगा, स्ट्रेंथ नजर आ रही है यहाँ पर। कोफोर्ज की लगातार चर्चा हुई है, नतीजे अच्छे थे, उसके बाद से भागा, वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है कोफोर्ज। ये तो कुछ वायदा स्टॉक्स की हमने चर्चा करी, लेकिन कैश मार्केट्स में जिस तरीके से नंबर्स आए और वैसे ही परफॉर्मेंस भी दिखी है, और अब तक कैश सेगमेंट में उन शेयरों की बात करेंगे जहां पे नतीजों के बाद तूफानी तेजी देखने को मिली है। फॉर एग्जांपल
थर्मैक्स, सोनाटा सॉफ्टवेयर, थायरोकेयर, देखिए आप मैनेजमेंट से तो बात भी हो रही थी थायरोकेयर को लेकर और काफ़ी पॉजिटिव भी हैं, आउटलुक काफ़ी मजबूत और 10 से 12% करीब करीब यहाँ पर उछाल देखने को मिला है। तो समझ लेते हैं आशीष से कि क्या वजह रही, नतीजों में ऐसा क्या आया जो गजब की तेजी इन सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं। देखिए कैश के स्टॉक्स में ही कमाल देखने को मिल रहा है, जहां पर स्टॉक्स में नतीजे बहुत बढ़िया आ रहे हैं, मार्केट खुलकर रिवॉर्ड कर रहा है, बड़ी तेजी आ रही है और सस्टेनेबल कंटिन्यूस तेजी आपको देखने को मिल रही है। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, जैसे थर्मैक्स हो गया, सोनाटा सॉफ्टवेयर है, थायरोकेयर, इसका जिक्र आपने किया, सब में काफी बड़ा मूव देखने को मिला है। बस ये उदाहरण है क्योंकि सबकी तो चर्चा कर नहीं सकते, इतना समय नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप देखिए थर्मैक्स, इसके नंबर्स बहुत शानदार देखने को मिले। अब क्वार्टर के दौरान इनका जो ऑर्डर फ्लो है ये तकरीबन 4,500 करोड़ का देखने को मिला, जो कि पिछले साल के मुकाबले 112%, क्योंकि इसी तिमाही में आप देखें तो बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर देखने को मिले। अब टोटल ऑर्डर बुक आपकी देखें तो तकरीबन 45,000 करोड़ के आसपास की आ गई है, जो कि पिछले साल से 27% ज़्यादा है। एक्सपेक्टेड जो मार्जिन थे, ग्रॉस मार्जिन, इसके मुकाबले भी बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। 370 बेसिस पॉइंट पिछले साल के मुकाबले बढ़कर अब 47.2% के ग्रॉस मार्जिन देखने को मिले। लेकिन स्टॉक अगर आप देखें तो फिलहाल 50 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन महंगे, लेकिन इसके बाद भी क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, मैनेजमेंट सेगमेंटल परफॉर्मेंस भी बढ़िया बता रहा है, मार्केट में तेजी देखने को मिली। आईटी स्टॉक्स की अभी हम चर्चा कर रहे थे, सोनाटा सॉफ्टवेयर क्या ओपनिंग देखने को मिली और लगातार स्टॉक्स में गेन देखने को मिले। अब आप चाहे सोनाटा सॉफ्टवेयर देखें, फर्स्ट सोल्यूशन देखें, बहुत बड़े मूव्स हैं। ये स्टॉक अभी भी 11% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। अब नंबर्स अनुमान के काफ़ी बेहतर थे। एबिट देखें तो सिक्वेंशियल तौर पर 5.5% बढ़ा है और एबिट मार्जिन जो कि 5.6% के थे वो 7.2%। एंड जैसे कि हमने देखा है कि आईटी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड है, ये इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक अभी भी, मतलब आज की तेजी के बाद भी 17% नीचे है। तो यहाँ पर आप देखें तो एक बढ़िया रैली देखने को मिली। अब थायरोकेयर की बात करते हैं और अब तक की सबसे बेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखने को मिली। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर एबिटा, हाईएस्ट एवर मार्जिन और हाईएस्ट एवर पैट, अब तक का बेस्ट क्वार्टर देखने को मिला। ये स्टॉक जरूर थोड़ा सा ऑफ आइज हो गया, लेकिन इसका देखी आप मेट्रोपोलिस को देखिए, सिमिलर इंडस्ट्री है, उसका स्टॉक तकरीबन 10% चल गया। अब मेट्रोपोलिस के 13 मई को नंबर्स आने हैं। थायरोकेयर की नंबर्स की बात करें तो एबिटा तकरीबन 30% बढ़ा, जो 30% के मार्जिन पिछले साल और पिछले क्वार्टर थे वो बढ़कर अब 34% के देखने को मिले। और पूरे सेक्टर में आप देखें तो थायरोकेयर के नतीजों के बाद बज आ गया। तो कुछ कैश के स्टॉक्स हैं जहां पर कमाल देखने को मिला। ओके, शुक्रिया आशीष। एक काम करते हैं, हम धमाकेदार ऑप्शंस लेते हैं शिल्पा जी से, पंकज जी से और अरुण जी से। शिल्पा जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। हाँ जी बिल्कुल अनुज जी, ऑप्शंस के लिए मैं यहाँ पे रिलायंस पे मेरा ध्यान है। 1460 कॉल जो रफली 18 रुपए का अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 11 का रखिए, पहला टारगेट 25 का रहेगा, इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है तो 32 से 35 भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिलायंस डेज हाई पर आ गया रिलायंस और गिरावट देखने को मिल रही थी शुरुआत में, लेकिन अच्छी रिकवरी रिलायंस में भी देखने को मिल रही है। शिल्पा जी के रडार पर आया ऑप्शन पर खरीदारी की राय, डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर है। अरुण जी बताइए ऑप्शन में कौन सा स्टॉक? श्रेया जी, कंज्यूमर स्पेस में ही मोमेंटम है, तो एशियन पेंट्स में एक ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट डे एंड पे भी कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है। 2600 के ऊपर स्टॉक निकल रहा है, तो 2600 के कॉल लेने की सलाह रहेगी। 60 रुपए के आसपास चल रहा है, 51 का स्टॉप लॉस लगाए। 79 से 82 तक के टारगेट्स 2600 के कॉल में देखने को मिल सकते हैं। ओके, एशियन पेंट्स 2600 की एट द मनी कॉल। पंकज जी आपका ऑप्शन ट्रेड। सर वैसे नजरें तो रिलायंस पे ही थी, लेकिन फिलहाल किंग्स टेक्नोलॉजी के 4,600 के कॉल ऑप्शंस पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 180 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है, 160 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 220 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। ओके, केन्स टेक आ गया। एक बार निफ्टी लेकर आइएगा स्क्रीन पर, और निफ्टी अब हम ऑलमोस्ट 24,231 पर तो आ गए हैं सर। अच्छी रिकवरी अब देखने को मिल रही है, और जो आप जिक्र कर रहे थे डेज हाई के ऊपर अगर हम क्लोज होते तो पॉजिटिविटी आएगी फिर मार्केट में, लग रहा है उस स्तर तक जा रहे हैं आप। देखिए पता है आजकल ना बहुत मतलब जो करते हैं वो करते हैं कि एक व्यू 8:30 पे ले लीजिए, एक व्यू 9:15 पे ले लीजिए, उसमें से जो सही हो उसके बाद उसके रिकॉर्डिंग प्ले करते रहिए, है ना। हमसे वो नहीं होता है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं आपको श्रेया, सिर्फ सीएनबीसी की आवाज ने एक आज सुबह बात कही थी कि गैप डाउन से घबराना नहीं है। गैप डाउन होगा वो तो पूरे कल बताना था ना। अब फ्राइडे फैक्टर की अगर बात थी तो कल शाम को बता देते लोगों को, तो फिर लोग शॉर्ट लेके जाते, तब तो फायदा होता लोगों का कि भाई चलो ठीक है कोई फायदा होगा। और सिर्फ
हमने आज सुबह आपको बताया कि क्या बाइंग का जोन है निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर थोड़ा उससे नीचे आ गया, बिल्कुल ठीक है निफ्टी पर। और सिर्फ गिफ्ट निफ्टी देखकर ना ये नहीं कहना चाहिए कि ट्रेंड रिवर्स हो गया मार्केट में, ठीक है। आज भी स्टॉक स्पेसिफिक शानदार मौके मिले हैं, सारे के सारे मौके, लॉन्ग साइड पर भी शॉर्ट साइड पर भी। आप डाबर देख लीजिए, ब्रिटानिया देख लीजिए, दोनों का चार्ट देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए दोनों के चार्ट किस तरीके के मूव आए हैं दोनों में, है ना। सुबह लुपिन का देख लीजिए, लुपिन एकदम तो ठीक है। और बाजार में जो स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी शानदार मौके हैं, बड़ा ट्रेंड अभी भी कायम है, वो इस तरीके से नहीं टूटता है बड़ा ट्रेंड। और आज मार्केट ने क्या किया होगा, आज मार्केट ने थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उल्टा जो लोग नर्वस हुए होंगे, जो थोड़े से वीक लॉन्ग्स होंगे, जो थोड़ी सी सिर्फ गिफ्ट निफ्टी देखकर भाग जाते होंगे, वो भाग गए होंगे। तो हो सकता है कि हो जाए मंडे को, हो सकता है कि बड़ा गैप अप भी हो जाए, इसकी भी प्रोबेबिलिटी रहेगी। और हमने बात क्या की थी, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, हमने बात की थी अगले हफ्ते के कॉल ऑप्शन लेने के, मतलब 19 तारीख वाले, है ना। हाँ 19 तारीख वाले कॉल ऑप्शन लेने की बात की थी। उसमें बहुत कम प्राइस डैमेज हुआ होगा और हो सकता है कि वो अभी भी आपको सही बना कर दे, पैसा बना कर दे। इसका अभी भी मेरा एक वो रहेगा। और ये यही होता है जब आप थोड़ा सा टाइम वैल्यू लेकर चलते हैं ना, तो उससे एक फ़र्क पड़ता है। बाकी गिफ्ट निफ्टी देखकर आप, अगर आपको ये था ना, मैं तो उनकी रिस्पेक्ट करूंगा जो मुझे कल बता देते थे दोपहर को कि आज सुबह गैप डाउन होने वाला है, बता देते आप ही, तो व्यूअर्स का भी फायदा होता है ना। गिफ्ट निफ्टी देख के तो रोबोट भी बता देगा आपको, या बच्चा भी बता देगा कि आपको कि आज मार्केट की ओपनिंग थोड़ी खराब होगी। ओपनिंग खराब होगी उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्लोजिंग कहाँ होगी, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है। अभी भी खैर आखिरी का 45 मिनट बाकी है, यू डोंट नो क्या होता है। अभी तो खैर ब्रेंट क्रूड 99.82 पर है इस समय। $100 के नीचे आया ब्रेंट और रुपए में भी मजबूती। दिन के ऊपरी स्तर पर रुपया भी आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा और ये पॉजिटिव लग रहा है मार्केट के लिए, इसलिए रिकवरी भी दिख रहे हैं आप। कुछ और काउंटर्स डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पर स्ट्रेंथ है आज के सेशन में। नुवामा और कैपिटल मार्केट स्पेस का तो हमने जिक्र कर ही लिया, टाइटन भी हमने देख ही लिया। एक बार रखिएगा स्क्रीन पर डिक्सन। डिक्सन आज थोड़ा गिर रहा है, इनफैक्ट पूरा ये ईएमएस स्पेस रखिएगा। एम्बर में हमने पिछले कुछ सत्रों से अच्छी खासी तेजी देखी थी। एम्बर भी क्या कर रहा है आज के सेशन में, एक बार एम्बर एंटरप्राइजेस भी रख दीजिए, यहाँ पर भी थोड़ा वीकनेस देखने को मिल रहा है। लगातार जो अच्छी खासी तेजी थी माइनस जी डिक्सन पर, आज थोड़ा वहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है। डिक्सन जो टूटा है इन लेवल्स पर लेंगे या फिर अभी अवॉइड करेंगे? देखिए अभी अवॉइड करेंगे, क्योंकि ध्यान रखें ये स्टॉक अपने 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। एक प्राइस सपोर्ट था 10,775 रुपए के आसपास, उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो खरीदारी ना करें, वेट करेंगे जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ना निकले, तब तक खरीदारी ना करें, जो कि इस टाइम के लिए 11,100 के आसपास है। चार का चौका ले लेते हैं, सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे शिल्पा जी से, फिर चलेंगे अरुण जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए मानस जी के पास, और मिड कैप फंडा के लिए सिद्धार्थ खेमका जी के पास चलते हैं। तो शिल्पा जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। अनुज जी, सस्ता ऑप्शन मुझे यहाँ पे नाइका पे ही देना है। मुझे अच्छा लग रहा है स्टॉक, मुझे लगता है 280 तक ही जा सकता है। तो यहाँ पे 280 कॉल ऑप्शन जो रफली 5-5.5 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 4 रुपए का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट टुवर्ड्स 8 रहेगा, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 10 भी जा सकता है। और ये सेम रिकमेंडेशन हमने प्रभुदास लीलाधर में भी बीटीएसटी इसको रिकमेंड किया है। ओके, एफएसएन ई कॉमर्स की 280 की कॉल 5.55 पे ट्रेड करती है। अरुण जी आपका एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक कर रहे हैं? वीरेन जी, सीजी पावर में काफी अच्छा ब्रेकआउट है। इनफैक्ट आज मोमेंटम आज भी कैरी हुआ है, 870 के आसपास चल रहा है। कहीं ना कहीं 910 तक के टारगेट मुझे लग रहा है सीजी पावर में आने चाहिए। कल इसका ब्रेकआउट हुआ था, आज फॉलो बाइंग देखने को मिल रही है। 854 के स्टॉप लॉस के साथ सीजी पावर को बाई करें, 910 तक के ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, मीनवाइल अगली ट्रेड लें इससे पहले दो चार्ट दिखाइए, एक तो ब्रेंट और एक दिखाइए डॉलर रुपये का इंट्राडे। ये देखिए डॉलर रुपये 94.67 तक जाकर अब 94.42 तक आए हैं, और थोड़ी और स्ट्रेंथ अगर आ जाए तो मज़ा आ जाए। और ब्रेंट भी अब 99.85 पर, और निफ्टी अब 24,236 पर। और अगर आज का हाई क्रॉस हुआ 24,253 के आसपास, तब आएगा मजा, क्योंकि तब फंसेंगे शॉर्ट्स। खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं, मानस जी से लेते हैं चार्ट का चमत्कार। मानस जी बताइए क्या है चार्ट का चमत्कार आपका? देखिए चार्ट के चमत्कार के लिए ओबराय रियल्टी में ऑप्शन के में खरीदारी करने की राय रहेगी। ओबराय रियल्टी करेक्ट हुआ था, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और रैली रिज्यूम हुई है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 1684 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1760 1760 के टारगेट सेट करेंगे।
ओके, ओबरा रियल्टी 1711 पे आपका बाय कॉल। आज का चार्ट किस्मत का सिद्धार्थ खेमका जी के पास चलते हैं मिड कैप फंड के लिए। सिद्धार्थ जी, मिड कैप में क्या पिक कर रहे हैं? वीरू, मेरा मिड कैप आइडिया है रेडिको खेतान। बाय कीजिए, 1 ईयर टारगेट प्राइस 4000 का है। कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग Q4 नंबर्स दिए, रेवेन्यू में 15% ग्रोथ देखने को मिला। जो प्रेस्टीज एंड अबव जो प्रीमियम सेगमेंट है वहां पर 28% वॉल्यूम ग्रोथ के साथ हमने देखा कि जो मार्जिन है वो 450 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड कर रहे हैं। एबिटा में 60% ग्रोथ देखने को मिला। तो जो कंपनी में एक प्रीमियमाइजेशन है वो स्टोरी काफी स्ट्रांगली प्ले आउट हो रही है। जो प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट है वहां पर, जिसकी वजह से मार्जिन भी बढ़ रहे हैं और बिजनेस में अच्छी ग्रोथ आ रही है। बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है। कंपनी का फोकस रहा है लग्जरी सेगमेंट, जो प्रीमियम सेगमेंट है वहां पर मीनिंगफुली स्केल कर रही है, बोथ इंडिया में और ग्लोबल में भी इनके ब्रांड्स काफी चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो कंसिस्टेंटली कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है प्रीमियम कैटेगरीज में, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कर रही है, उसको लेकर 25% अर्निंग सीएजीआर अगले 2-3 सालों में देखने को मिलेगा। तो काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस है। तो बाय कीजिए रेडिको खेतान, टारगेट प्राइस 4000 रुपीज। चलिए, मीनवाइल एसबीआई की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट आ रही है। चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि FY27 के मार्जिन जो हैं वो 3% से ऊपर रहेंगे। तो ये एक बड़ी खबर, प्लीज़ इसको हटाइए और जो एसबीआई के चेयरमैन कह रहे हैं उसको रखिए, वो इम्पॉर्टेंट है मार्केट के लिए। और इसी वजह से थोड़ी सी स्टॉक में भी रिकवरी आई है, करीब लोअर लेवल से करीब अच्छा खासा स्टॉक यहाँ पर रिकवर हुआ है। चलिए ज़रा एक बार वापस देखते हैं इस पे। 5.6% के करीब अभी भी डाउन है स्टॉक का। लेकिन जो बड़ी स्टेटमेंट है वो आ रही है कि मार्जिन 3% के ऊपर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब पेंट शेयर्स आज थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं, ब्रोकरेजेस भी यहाँ पर पॉजिटिव हुए हैं, यहाँ पर रेटिंग भी बढ़ी है। पूरी रिपोर्ट श्रेया से समझ लेते हैं। श्रेया, बताइए। राइट से देखिए, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, चाहे आप इंडिगो पेंट्स देखें या फिर कंसाई नेरोलैक देखें, सभी में अच्छी खासी तेजी है। आज के सेशन में 5 से 6% अप आपको ये सारे स्टॉक्स नजर आएंगे डीज हाई के आसपास कामकाज करते हुए। दरअसल एक तो एक बड़ा फैक्टर आप देखें तो क्रूड भी 100 के नीचे आया है, उसने भी कहीं ना कहीं सेंटीमेंट सुधारा है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट कि आज इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई थी पूरे पेंट सेक्टर को लेकर, काफी बुलिश रिपोर्ट, पॉजिटिव रिपोर्ट थी। और उनका मानना है कि जो हमने कंपटीशन का पीक देखा था इस पूरे स्पेस में, अब वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा धीमा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और बिरला ओपस की अग्रेसिव एंट्री हुई थी, एक्सपेंशन कर रही थी कंपनी लगातार, और 3 से 5% तक मार्केट शेयर गेन किया था बिरला ओपस ने। लेकिन अब वहां पर भी धीमापन है और अब जो बिरला ओपस का मार्केट शेयर है वो मात्र 1.5 से 2% रह गया है। तो कंपटीशन कम हुआ है, कॉम्पिटिटर्स का मार्केट शेयर घटा है। इससे अगर इन्वेस्टेक का मानना है कि Q4 में लगभग 8% का मार्केट शेयर हासिल हो सकता है। और सेक्टर पे काफी पॉजिटिव व्यू बन रहा है, क्योंकि अब कंपटीशन की वजह से थोड़ा प्राइसिंग डिसिप्लिन भी आएगा और हाल में प्राइस हाइक भी लिया गया है, जिससे मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा आगे चलकर भी। और इंडस्ट्री का पूरा स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो वो काफी पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए एशियन पेंट्स पर, साथ ही बर्जर पेंट्स पर होल्ड की राय है। और एशियन पेंट्स पिछले कुछ सत्रों से चल भी रहा है, वो स्टैक रखेगा जो इन्वेस्टेक ने रखा है। और साथ ही कंसाई नेरोलैक और इंडिगो पेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ पर खरीदारी की राय है। कंसाई के नतीजे भी अच्छे आए थे, याद होगा आपको। और साथ ही इंडिगो पेंट 5.5% अप आज के सेशन में नजर आएगा। तो यहाँ पर रखे नजरें, क्योंकि स्टॉक में मोमेंटम काफी अच्छा है। जी हाँ, पेंट स्पेस और शेयर ने कहा जैसे कि स्टॉक से मोमेंटम अच्छा है। और याद रखिएगा, एशियन पेंट्स इस वक्त 2603 पर इस CY26 के ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि मेरे ख्याल से 26 जनवरी के बाद के अब तक के हाईएस्ट क्लस्टर पे है। और ये तब हो रहा है व्हेन क्रूड इज एट 102। सिद्धार्थ जी, आपने शेयर को सुना, इस रिपोर्ट को सुना। अगर कहीं पर भी पेंट्स में आपको थोड़ी बाइंग करनी हो, और मेरे ख्याल से इस पूरे स्पेस में शायद एक वॉर सी चल रही है अपने लॉस्ट ग्राउंड को रीगेन करने के लिए बाय लीडर्स, आप कौन सा पेंट स्टॉक इस वक्त ग्रैब करना चाहेंगे? बिल्कुल वीरू, देखिए सेक्टर काफी कंपटीशन और प्लस जो रॉ मटेरियल प्राइसेस, डिमांड एनवायरनमेंट, काफी हेडविंड्स थे जो सेक्टर को काफी इम्पैक्ट कर रहा था। बट अभी मुझे लगता है कि जैसे जैसे अब ये थोड़ा सा वॉर का रेटोरिक कम होगा, क्रूड ऑयल प्राइसेस कम होंगी, प्लस कंपनी ने फाइनली थोड़ा सा डिमांड एनवायरनमेंट बेटर देखा है, तो मुझे लगता है कि इन सारे पेंट्स कंपनीज में से एशियन पेंट्स ही एकमात्र कंपनी है जो कि अपने कैटेगरी में लीडरशिप, ब्रांड और स्केल एडवांटेज के साथ
साथ लेके चलता है। जो एलिवेटेड कंपटीशन है वो थोड़ा नियर टर्म परफॉर्मेंस ऑलरेडी इम्पैक्ट आ चुका है, वैल्यूएशंस में फैक्टर इन कर रहा है, बट हमें लगता है कि जो मैनेजमेंट का टारगेट है 8 to 10% वॉल्यूम ग्रोथ, उसके साथ वैल्यू में 5%, अराउंड 15% ग्रोथ अगर वो कर पाते हैं और एबिटा मार्जिन्स को 18-19% तक सस्टेन कर पाते हैं, तो ये कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली कंपनी में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। एंड मतलब अगर एक स्टॉक विद इन पेंट्स देखेंगे तो एशियन पेंट्स इज द स्टॉक व्हिच वी विल प्रेफर। ओके, चलिए अब काम करते हैं, बात करते हैं मंडे को आने वाले नंबर्स की। जी हाँ, अर्निंग सीजन इस बार थोड़ा लंबा चलने वाला है क्योंकि मार्च एंड का अर्निंग सीजन है। तो सोमवार को वायदा में यूपीएल, कैनरा बैंक और इंडियन होटल समेत 4 कंपनियों के नंबर्स आएंगे, 4 बड़ी कंपनियों के नंबर्स आएंगे। नंबर्स तो काफ़ी आएंगे। हमारे साथ आशीष और कंचन जुड़े हैं, उनसे नंबर्स का प्रीव्यू करते हैं। पहले आशीष के पास चलते हैं। कैनरा बैंक और इंडियन होटल्स कैसे रह सकते हैं नंबर्स? सर, कैनरा बैंक की तरफ से नंबर्स अगर आप देखें तो थोड़े से डल देखने को मिलेंगे। कारण यहाँ पर अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो इसमें कोई खास इजाफा नहीं है। तकरीबन सिर्फ 1.5% की बढ़त का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। यानी आप देखें तो 9,580 करोड़ ये इस बार एक्सपेक्टेड है। प्रीवियस ईयर में आप देखें तो 9,440 करोड़ ये आंकड़ा यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम का देखने को मिला था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो अगेन थोड़ी सी निराशा, तकरीबन 4% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि एक अच्छा टेक अवे हो सकता है कि सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो जो प्रोविजनिंग है इसमें 15% की गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन पैट ये तकरीबन 12% घटेगा। अब असेट क्वालिटी के लिहाज से देखें तो चाहे सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, सबकी तरफ से असेट क्वालिटी तो बढ़िया देखने को मिल रही है। तो जीएनपीएस और नेट एनपीएस दोनों कंफर्टेबल लेवल पर है और सीक्वेंशियल तौर पर आप देखें तो स्लाइट इंप्रूवमेंट भी यहाँ पर आपको नजर आएगा। लेकिन दिक्कत की बात एक और हो सकती है कि डिपॉजिट ग्रोथ और लोन ग्रोथ ये थोड़ी सी धीमी पड़ी है। सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो जो डिपॉजिट ग्रोथ 12.9% की थी अब वो घटकर 9% की देखने को मिलेगी, और साथ में जो लोन ग्रोथ 14.6% की थी इसमें भी हल्का सा मॉडरेशन है। 14.3% की ग्रोथ का अनुमान यहाँ पर मार्केट लगाकर चल रहा है। निम्स की बात करें तो फ्लैट देखने को मिलेंगे 2.1% पर सीक्वेंशियल तौर पर, और जो स्लिपेजेस है इस बार थोड़ा सा घटने का अनुमान है। क्रेडिट कॉस्ट भी देखें तो थोड़ा सा घट सकता है, लेकिन अब ये मुनाफे के आंकड़े में जो 12% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है, इसके पीछे का कारण ये है कि जो ट्रेजरी इनकम है इस क्वार्टर में ये थोड़ी सी घटी है, तो मुनाफे पर डेंट लगा है। लेकिन नंबर्स अगर आप ओवरऑल देखें तो मजा नहीं है, शायद मोस्टली वीक ही आएंगे। ओके, कैनरा के नंबर्स मोस्टली वीक आएंगे। अच्छा, इंडियन होटल्स, आशीष यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन है? इंडियन होटल्स की तरफ से देखें तो नंबर्स अच्छे हो सकते हैं। कारण ये कि क्वार्टर के पहले 2 महीने तो बहुत बढ़िया थे और ये तीसरे महीने में देखें तो थोड़ी सी वेस्ट एशिया तनाव का असर आ गया, लेकिन ग्रोथ है। रेवेन्यू में देखें तो तकरीबन 11% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। 2,425 करोड़ से अब बढ़कर 2,690 करोड़ ये आंकड़ा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। एबिटा 857 करोड़ से बढ़कर 960 करोड़ देखने को मिलेगा, यानी 12% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मार्जिन हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नहीं है, मतलब 35.3% के एबिटा मार्जिन पिछले साल थे जो कि अब बढ़कर 35.7% देखने को मिलेंगे। मुनाफे की बात करें तो बहुत हल्की सी 5% की बढ़त आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इनकी जो की मार्केट्स है, मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, बैंगलोर है, यहाँ पर ऑक्यूपेंसी बड़ी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखें तो एवरेज रूम रेट्स यहाँ पर साल दर साल आपको 6% की बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन ऑक्यूपेंसी 76% की है ओवरऑल पोर्टफोलियो में, जो कि अगर आप पिछले साल के मुकाबले देखें तो करीब करीब 3-3.5% कमजोरी नजर आ रही है। लेकिन ARR में हल्का सा इंप्रूवमेंट है और पहले 2 महीने अच्छे रहे, इसके हिसाब से आप देखें तो स्टेडी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। स्टेडी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है इंडियन होटल से, और ये उम्मीद हो गई इंडियन होटल से। कंचन, आप बताइए यूपीएल के नतीजे कैसे रह सकते हैं? जी, अगर चौथी तिमाही में यूपीएल के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप लाइन की। टॉप लाइन में हमें करीब करीब 10 से 15% का जो जंप है वो साल दर साल देखने को मिल सकता है। ऑपरेटिंग नंबर्स भी यहाँ पे हमें शानदार देखने को मिल सकते हैं। मार्जिन का जो अनुमान लगाया जा रहा है, माना ये जा रहा है कि 22 से 23% पे मार्जिन जो है इस टाइम पे रिपोर्ट किए जा सकते हैं। वहीं अगर बात करी जाए कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की तो 1,575 करोड़ पे ये जो नंबर है आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए, अगर हम ओवरऑल नंबर्स की बात करें तो सेट ऑफ नंबर्स हमें हेल्दी साइड में देखने को मिल रहे हैं और एवरेज हमें
10% की जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड है Q4 में, क्योंकि इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस टाइम पे जो इनका नॉर्थ अमेरिका का और जो यूरोप का मार्केट है वहां से जो डबल डिजिट ग्रोथ की संभावनाएं हैं वो जताई जा रही है। इस टाइम पे जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहे हैं उसका भी यहाँ पे जो इम्पैक्ट है हमें मिनिमल साइड में देखने को मिल सकता है, बिकॉज इनकी जो इन्वेंट्री है वो काफी लो कॉस्ट इन्वेंट्री है, तो जो हमें इम्पैक्ट है वो लोअर साइड में ही देखने को मिलेगा। लेकिन की मॉनिटरेबल्स क्या होंगे उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। इस टाइम पे जो रॉ मटेरियल का प्राइस ट्रेंड है, साथ में डेट लेवल, केपेक्स प्लान किस तरीके का है, और साथ ही साथ जो इस टाइम पे पूरी जियोपॉलिटिकल टेंशन है उससे ग्लोबल डिमांड सप्लाई का सिनेरियो किस तरीके का रहता है वो ध्यान में रखना होगा। लेकिन सेट ऑफ नंबर्स पॉजिटिव है। ओके, नंबर्स पॉजिटिव एक्सपेक्टेड हैं। मीनवाइल वो बस क्रॉस नहीं होने दिया इंटरडे हाई निफ्टी का, और वहीं से वापस गिरावट आ गई, सेकेंड राउंड ऑफ गिरावट आ गई श्रेया। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। मैं होप कर रहा था कि वो उसको आप निकाल देंगे तो पॉजिटिव हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में एक्सेस सिक्योरिटीज़ के CIO नवीन कुलकर्णी जुड़े हैं। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। नवीन जी, पहला सवाल बैंकों पर और ख़ास तौर से PSU बैंकों पर आज SBI के नंबर्स आए, थोड़े मार्केट को फीके लग रहे हैं। क्या ये मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव फैक्टर हो सकता है? जहाँ तक ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का सवाल है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल जो कोर ऑपरेटिंग मेट्रिक्स है वो ठीक रहे हैं। FY27 का आउटलुक भी ठीक है, तो सेक्टर ओवरऑल ठीक है। जहाँ तक कैटेगरीज का सवाल है, अगर हम प्राइवेट बैंक्स देखेंगे तो प्राइवेट बैंक्स हम ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं वर्सेस PSU बैंक्स, राइट? तो PSU बैंक्स में ऑब्वियसली निम का प्रेशर ज्यादा रहेगा, ज्यादा दिखाई दिया है SBI में, आगे जाके भी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सकता है। दैट इज एक प्रॉब्लम। दूसरा ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट जो कटने थे वो कट चुके हैं। आई डोंट थिंक सो कि इंटरेस्ट रेट यहाँ से और गिर सकते हैं, आगे जाके बढ़ भी सकते हैं, तो दैट कैन इम्पैक्ट ट्रेजरी इनकम। तो ओवरऑल प्रेफरेंस थोड़ा प्राइवेट बैंक्स की तरफ रहेगा कंपेयर टू PSU बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स के वैल्यूएशंस भी काफी सस्ते हैं अभी एट करंट लेवल्स, तो प्रेफरेंस वहां पे ज्यादा रहेगा। और SBI देखा जाए तो काफी रीरेट हो चुका था, तो सम बिट ऑफ अभी डी रेटिंग हो रहा है, और वो मुझे लग रहा है कि इस छोटा सा मार्केट साइकिल है। ओके, तो नवीन जी का झुकाव जो है वो PSU बैंक्स ये पे नहीं, प्राइवेट बैंक्स पे है, वहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट भी उनको है अभी। अच्छा नवीन जी, अब आते हैं दूसरे तबके पे, जिसने इस बार अपने नंबर्स के साथ एक अच्छा प्राइस रैच दिया है, दैट्स FMCG। सिर्फ मैं अगर एक नंबर पकड़ के चलूँ, देयर वॉल्यूम ग्रोथ, इस बार आपको उनकी वॉल्यूम और रूरल और अर्बन की जो ग्रोथ रही इस बार की, उसको देखते हुए FMCG पे कोई आप लोगों ने कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखी है या फिर हल्का सा झुकाव उस तरफ? जहाँ तक FMCG सेक्टर का सवाल है, मुझे लग रहा है कि ये पूरा साल FMCG के लिए अच्छा रहेगा। FY27 जो है वो FMCG के लिए अच्छा रहेगा, एंड अलोकेशन ज्यादा करके बढ़ेगा ऑफ फंड्स, राइट? इसके इसके दो कारण हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो इन्फ्लेशन होता है, स्पेशली रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन जो होता है, वो ब्रांडेड FMCG प्रोडक्ट्स का दोस्त होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन आने के कारण जो प्रोडक्ट प्राइस, जो इनपुट कॉस्ट बढ़ते हैं, तो उसके कारण जो ब्रांडेड कंपनीज है, जैसे लीवर हो गया या डाबर हो गया, कोई भी कंपनी हो गई, उन लोग जो इंक्रीज इन जो इनपुट कॉस्ट है पास ऑन कर देते हैं पूरी तरीके से एंड इन परसेंटेज टर्म्स। तो वो थोड़ा लैग से होता है, लेकिन जब लैग से होता है तो ऑब्वियसली उसका ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट काफी मिलता है इनको। दूसरा ये है कि जब इनपुट कॉस्ट बढ़ जाते हैं तो जो छोटे प्लेयर है, अनऑर्गेनाइज मार्केट है, स्पेशली कैटेगरीज लाइक डिटर्जेंट्स एंड ऑल, वहां पे अनऑर्गेनाइज मार्केट जो है वो बहुत ही धीमा हो जाता है, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता। सेकंड, वो जो इनपुट कॉस्ट है वो पास ऑन नहीं कर पाते। तो FMCG कंपनीज के साथ मुझे लग रहा है कि ये होगा कि इस साल कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी कम रहेगा, नॉमिनल ग्रोथ रेट बेहतर रहेगा, और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी कम रहने के कारण इन लोग वॉल्यूम ग्रोथ सस्टेन कर पाएंगे, और आगे जाके पॉसिबिलिटी ये भी है कि इनका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस एंड मार्केटिंग एक्सपेंस थोड़ा सा कम रहे, तो मार्जिन ओवर मीडियम टर्म इंप्रूव हो जाएगा। तो FMCG के लिए बहुत ही अच्छा टाइम मुझे लग रहा है आता हुआ, तो FMCG स्टॉक्स पे पॉजिटिव रहना चाहिए। ओके, FMCG स्टॉक्स पर पॉजिटिव होना चाहिए, दिन सुधरेंगे यहाँ पर। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। और IT एज ए स्पेस पर क्या व्यू बन रहा है? आज यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है, और
अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक भी चर्चा करें सर तो कोफोर्ज के नतीजे अच्छे थे, ओएफएस के नतीजे अच्छे थे, तो मार्केट ने वैसे रिवॉर्ड भी किया। क्या वक्त है आईटी स्पेस में सिलेक्टिव बाइंग कर सकते हैं जिसका दर ये टूटा है? क्या वैल्यूएशन अभी कंफर्टेबल नजर आ रहा है आपको? साथ ही आपका हाउस व्यू क्या बन रहा है? क्या आप लोगों ने इस पर वेटेज इंक्रीज किया या फिर अब भी अंडरवेट है? जहाँ तक आईटी सेक्टर का सवाल है, हमारा वेटेज ये सेक्टर में बहुत कम रहा है ओवर द लास्ट 1.5 ईयर्स। इनफैक्ट 2 साल से सेक्टर एलोकेशन बहुत कम रहा है। लेकिन अभी जो गिरावट हुई है सेक्टर में, यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा आईटी सेक्टर में एलोकेशन करना चालू किया है। स्पेशली यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो बेंचमार्क स्टॉक्स में एलोकेशन की तरफ फोकस कम। इसके अलावा जो अल्फा स्टॉक्स अगर हम कहें, स्मॉल कैप मिड कैप्स, वहां पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा है। क्योंकि होगा क्या नेक्स्ट 1 साल में, अभी जो चैलेंजेस जो एआई के आ रहे हैं उसके वजह से जो क्लाइंट्स है और कंपनीज के बीच में काफी डिस्कशंस होंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड अदर थिंग्स। तो 1 साल का जो चैलेंज है वो उसके वजह से ऑब्वियसली प्रेशर बना रहेगा ऑन ग्रोथ। लेकिन जो छोटे कंपनीज है उनका कैपेबिलिटी एनहांसमेंट मुझे ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रोथ रेट वहां पे बेहतर हो सकते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में। जैसे कोफोर्ज के नतीजे आउटस्टैंडिंग थे, मुझे लग रहा है कि वो सब वैसे कंपनीज में मुझे लग रहा है कि आगे जाके कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट आ सकता है एंड अलोकेशन वैसे कंपनीज में बढ़ सकता है। तो मोर लाइकली मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज जहां पे कोई इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं वो अपना गाइडेंस मीट कर पाए। लार्ज कैप कंपनीज में थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा, लेकिन अलोकेशन मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर में थोड़ा थोड़ा ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स करना चाहिए और स्लोली बढ़ाना चाहिए। ओके। अच्छा, क्लियरली जो सबसे शानदार आउट परफॉर्मेंस रही है मार्केट की वो तो कैपिटल मार्केट थीम में ही है। आज भी देखें नोवामा 10% ऊपर है। इधर आपका क्या व्यू है? कैपिटल मार्केट का जो थीम है यहाँ पे अगेन वाइड रेंज ऑफ कंपनीज है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, ब्रोकिंग कंपनीज है, राइट। तो मुझे जनरली जो भी प्लेटफॉर्म कंपनीज है वो काफी ठीक लग रहे हैं, क्योंकि उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है कि अगले 12 मंथ्स में बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, लेकिन वॉल्यूम्स ठीक रहेंगे, उसके वजह से प्रॉफिट ग्रोथ काफी शानदार रहेगा। तो अगर आप देख लीजिए जो स्पेस में जैसे एमसीएक्स हो गया या एंजल वन हो गया या ग्रो हो गया, आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये सारे कंपनीज आगे जाके ठीक करेंगे। इसके अलावा जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है वहां पे भी मुझे लग रहा है कि मोबिलाइजेशन इस साल अच्छा रहेगा एंड एसेट्स अच्छे से ग्रो करेंगे, तो वहां पे भी अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगी। तो ओवरऑल कैपिटल मार्केट ओरिएंटेड स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। प्रेफरेंस रहेगा प्लेटफॉर्म कंपनीज फॉलोड बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। अच्छा नवीन जी, इस बार कैपिटल गुड्स में अगर सिर्फ एलएनटी और मिडिल ईस्ट का कंसर्न जो उसको एक प्राइस डैमेज देके गया, अगर आप उसको छोड़ दें तो पूरा का पूरा कैपिटल गुड स्पेस अलोंग विद एलएनटी उतना नहीं गिरा, बीच में प्राइस डैमेज कंट्रोल भी हुआ था। आप कमिंस को देखिए, सिमेंस को देखिए, एबीबी को देखिए और बीएचएल अपना 19 ईयर्स का हाई ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ। यहाँ पर आपका व्यू और कितना स्पेस देना चाहिए कैपिटल गुड्स को इस वक्त? कैपिटल गुड स्पेस का जहां तक सवाल है, अगर हम देखेंगे तो पावर सेक्टर ओवरऑल नेक्स्ट 12 से 24 महीने के लिए अच्छा रहेगा, तो दैट हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन कैपिटल गुड सेक्टर। जहां तक लार्सन का सवाल है, मुझे जो लगता है कि जो काइंड ऑफ एनवायरनमेंट था इन द लास्ट 3 मंथ्स उसके हिसाब से लार्सन ने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है। तो मुझे बहुत चैलेंजिंग नहीं लग रहा है लार्सन। लार्सन मुझे लग रहा है कि इन द लार्ज कैप स्पेस अगेन नेक्स्ट 12 महीने में आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि कैपिटल गुड स्पेस में हम दो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, स्पेशली जो कंपनीज लाइक लार्सन है उसमें दो एरियाज पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। एक तो जो ऑर्डर बुक एंड ऑर्डर बुक ग्रोथ, एंड दूसरा जो क्रिटिकल फैक्टर है वो वर्किंग कैपिटल है। कैपिटल गुड्स कंपनीज में अगर वर्किंग कैपिटल मैनेज हो रहा है एंड वर्किंग कैपिटल बहुत नहीं बढ़ रहा है, सो दे आर नॉट अंडर स्ट्रेस, दे आर डूइंग वेरी वेल। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि कैपिटल गुड्स कंपनीज में अगर हम ट्रांसफार्मर कंपनीज ले या ईपीसी कंपनीज ले या मतलब लार्सन जैसे कंपनीज ले, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में अच्छा करेंगे। ठीक है, 12 महीने के लिहाज से नजरिया पॉजिटिव है। अच्छा, टाइटन के भी नतीजे आए नवीन जी और एकदम से स्टॉक में पंख लग गए, भाग गया, 4.5-5% अप है लाइफ टाइम हाई पर।
टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, ये ज्वेलरी एज अ स्पेस कैसा लग रहा है आपको, कंसिडरिंग जिस तरीके से हमने वॉलेटिलिटी देखी, गोल्ड एंड सिल्वर में उतार चढ़ाव देखा है, क्या व्यू बन रहा है? जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी ऑब्वियसली ये टाइटन के जो नंबर्स थे, नतीजे थे, थोड़े एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं, लेकिन मेन एडवांटेज क्या है कि जो टाइटन जो ओवरऑल ग्रोथ दे रहा है, जैसे ज्वेलरी सेगमेंट में 50% का ग्रोथ था, राइट, प्रॉफिट ग्रोथ 35%, तो ब्रॉडली स्पीकिंग जो ग्रोथ जो ये कंपनीज डिलीवर कर रही है, कंपनीज लाइक टाइटन, दैट इज आउटस्टैंडिंग। चैलेंज ये रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे गोल्ड प्राइस है, गोल्ड प्राइस की वजह से भी इंप्रूव होता है, एंड देन ऑब्वियसली परसेंटेज ऑफ मार्जिन होता है, तो वो भी एब्सोल्यूट एबिटा भी उसी तरीके से बढ़ जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि FY27 विल बी अ लिटिल टफर ईयर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, राइट। वॉल्यूम ग्रोथ लेड ज्यादा होगा, प्राइस ग्रोथ लेड कम होगा, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ओवरऑल मार्जिन शायद मैनेज हो जाए, लेकिन मे बी ग्रोथ जो फैक्टर है वो उतना तेज ना रहे जितना FY26 में रहा है। FY26 मुझे लग रहा है कि काफी आउटस्टैंडिंग ईयर रहा है। ऐसा साल रिपीट होना FY27 में बहुत अनलाइकली है, बट ये हो सकता है कि स्टिल कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ दे दे, बट मार्जिन और ये पैड ग्रोथ काफी क्रिटिकल रहेंगे अगले साल में। चलिए नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में शामिल रहे, सभी सेक्टर्स पर अपनी अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड हैव अ नाइस वीकेंड एज वेल। चलते हैं इस क्लोजिंग को देखते हैं। अब इट्स 24181। अनुज, किसी भी लिहाज से अगर आप देखें, जो बातें आज सुबह सुबह हवाओं में थी, है ना, जो क्रूड था, जिस प्रकार से रुपया था, उसके अगेंस्ट तो ये फिर भी एक सधी हुई, अगर आप देखें क्लोजिंग, है ना, जिसे कहते हैं कि सम्मान पूर्वक, है ना। कैसे डील करें इस क्लोजिंग को और मंडे के लिए व्यू? अनुज, हवा में तो बहुत बातें थी वैसे वीरू, सही कह रहे हैं आप, उसके हिसाब से क्लोजिंग इतनी खराब नहीं है, 99.9 पर तो वैसे सारी नहीं सुनी, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो कुछ होंगे। अच्छा चलिए ठीक है, देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी को एक दिन और देंगे वीरू, है ना, एक दिन और देंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को, और ठीक है, अगर मंडे भी ट्रेंड खराब रहा तो फिर मानेंगे कि हाँ ट्रेंड टूट गया है, लेकिन मेरा अभी भी व्यू ये है कि मार्केट में अभी भी एक ब्रेकआउट हो चुका है और अब मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके नेक्स्ट राउंड ऑफ ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है। मंडे को गैप अप हो गया तो क्या करेंगे, फिर गैप अप के बाद लेने आएंगे क्या? तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मौका आपको टेक्निकली आज मिल रहा है और उस पोजीशन में जोड़ने का। ठीक, अभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगा है 24,100 का जो हमारा स्टॉप लॉस था। हाँ, मंडे को बाउंस बैक आया तो नई रैली हो सकती है। अब आपके पास लेवल आ गए इंपॉर्टेंट मंडे के लिए, कल आज का हाई और आज का लो। आज का हाई 24,254 है, अगर उसके ऊपर शुरुआत हुई तो बड़ी रैली हो सकती है, और फिर लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा सा आज नेगेटिव है, लेकिन वो थोड़ा सा SBI का इम्पैक्ट है। एक दिन और देंगे मार्केट को और उसके बाद फिर एक फ्रेश व्यू बनाएंगे। चलिए श्रेया, एक दिन, यस सर, एक दिन और देंगे मार्केट को और फिर फ्रेश व्यू बनेगा मार्केट पर, और ये ऐसे ही अप्रोच रखनी है आपको मार्केट में। चलिए अब हमारे पैनल कौन से स्टॉक्स चुन रहे हैं वो समझ लेते हैं। STBT या BTST की शुरुआत करते हैं। मानस जी बताइए, सोमवार के लिए कौन सा स्टॉक? देखिए, सोमवार के लिए फेडरल बैंक पे मेरा ध्यान है। फेडरल बैंक लोअर लेवल से लगातार बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। ओके, प्राइस चल रहे हैं 297 के आसपास, यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 294.90 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी, और 306 रुपए के टारगेट सेट करने हैं फेडरल बैंक के फ्यूचर में। फेडरल बैंक फ्यूचर्स आपको यहाँ पे बाय करने हैं इसमें, और एक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी। पंकज, आप क्या कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी, रिलायंस के ऊपर नजरें हैं। मुझे लगता है कि रिलायंस के फ्यूचर्स में खरीदारी की सेटअप बन रहा है और खरीदारी की सलाह रहेगी। 1440 के आसपास फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है। 1425 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 1460 1475 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकता है। ओके, सोमिल, आप क्या कैरी कर रहे हैं मंडे के लिए? मैं कैरी कर रहा हूँ AU बैंक। एक्चुअली फेडरल बैंक पे भी मेरी नजर थी, लेकिन AU बैंक अब चूज कर रहा हूँ। AU बैंक भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ है लास्ट 2 दिन में, 20 डेली मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है। ऑल द सेटअप इज ग्रेट। टारगेट रहेगा 1100 का और स्टॉप लॉस रहेगा 1025।
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरुआत में जिक्र किया था वीरेंद्र जी ने, और यहाँ पर सोमिल जी के भी रडार पर आता हुआ कैरी कर सकते हैं एज BTST। पंकज जी आप भी BTST या STBT? अच्छा पंकज जी का हो गया था जी। अरुण जी आप बताइए, अरुण जी BTST या STBT? शेयर जी डेफिनेटली BTST के साथ ही रहना है। अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव ही नजर आ रही है, तो एशियन पेंट्स के साथ ही रहना चाहूंगा, जिसका ऑप्शन थोड़ी देर पहले दिया था। 2600 के आसपास चल रहा है, इसको एज ए BTST लेके चल सकते हैं। 2575 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2648 तक के ऊपर में टारगेट। ओके, एशियन पेंट्स 2599 पे आपकी बाय कॉल। कविता जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? क्या फिरेन जी, सो रियल एस्टेट से होगा। प्रेस्टीज एस्टेट एक बहुत अच्छी क्लोजिंग देते हुए दिख रहा है अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। 1510 के लेवल पर अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। फॉर द प्राइस मूव ऑफ 1540 1560 तक का प्राइस मूव अप्रोच होना चाहिए। 1480 के स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करें। ओ चलिए ठीक है, अब एक काम करते हैं, बीरो के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। आज तो मार्केट ब्रेथ थोड़ी वीक रही होगी बीरो। बिल्कुल अनुज, थोड़ी सी वीक रही है, एंड स्पेशली अगर आप देखें करीब करीब 24,200 को मेंटेन कर रहे थे मिड सेशन तक, लेकिन टुवर्ड्स क्लोज अगर आप देखें ये जो फासला थोड़ा बढ़ा, स्पेशली मोर स्पेशली आफ्टर SBI, क्योंकि उसके बाद PSU बैंक्स में एक डैमेज था। 80 शॉट्स और 48 में अगर आप देखें तो लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी अगर आप इस पूरी फिगर को देखें तो 138 डिक्लाइंस, लॉन्ग्स 52, शॉर्ट कवरिंग करीब करीब 34 में। एक एक करके स्लाइड्स लाइए। पहले दस्तूर है कि हम लॉन्ग्स की स्लाइड को देखते हैं। इस क्रम में सबसे ऊपर ये आपको देख के अच्छा लगेगा कि टाइटन ने पोस्ट नंबर्स एक बहुत अच्छा लॉन्ग कैरी करा। याद रखिएगा टाइटन एट आई थिंक 4.76% अप, नॉट एग्जैक्टली एट ऑल टाइम हाई, क्योंकि थोड़ी बहुत अगर आप देखिए प्रॉफिट टेकिंग होती है, बट कैरिंग सब्सटेंशियल लॉन्ग्स। नोवामा, डाबर, कल्याण, NBCC, इन सभी काउंटर्स में लॉन्ग क्रिएट हुए। सेकेंड स्लाइड आएगी शॉर्ट कवरिंग वाली, जहां पे शॉर्ट कवरिंग थी मंदड़ी बैकफुट पे थे, उसमें कोफोज क्या खूबसूरत पोस्ट अर्निंग्स जो इसका मोमेंटम है उसने कंटिन्यू किया। और याद रखिएगा ये क्लोज एट 100 डिमा पोस्ट 4 फरवरी 2026। देन अपोलो हॉस्पिटल्स, अद्भुत मूव था इसका। PNB हाउसिंग, अपोलो आज अपने करियर हाइज पे क्लोज हो रहा है। पर्सिस्टेंट मिड कैप IT में गॉडफ्रे फिलिप्स यहाँ पे आज शॉर्ट कवर था। नेक्स्ट स्लाइड आएगी यहाँ पर शॉर्टिंग की। इसमें डालमिया भारत, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पोस्ट नंबर्स कोलैप्स हुआ, ब्रिटानिया, ब्लू स्टार, लेकिन SBI ने याद रखिएगा 200 डिमा, और SBI ने अपना मोस्ट एक्टिव पुट राइटर्स एंड मोस्ट जहाँ पे पुट्स खड़ी होती है मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 1000 का, उसको अभी तक सिक्योर किया, और ल्यूपिन यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप था। नेक्स्ट स्लाइड लॉन्ग अनवाइंडिंग, जहाँ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। इस क्रम में सबसे ऊपर था आइनॉक्स विंड, PB फिनटेक, अल्ट्राटेक सीमेंट्स, सिप्ला और DLF। एक बार एक व्यू लेते हैं DLF पे, जहाँ पे मोमेंटम चलते चलते जो था ना वो लॉस्ट हुआ आज थोड़ा सा 608। ये रिजेक्शन कहाँ से आया है? ये रिजेक्शन आया है एक बड़े एवरेज से, बड़े एवरेज से। एग्जैक्टली आज का हाई कल का हाई सिमिलर है, एग्जैक्टली कार्बन कॉपी है, एंड एग्जैक्टली दैट इज 100 डिमा। पंकज आपकी राय क्या होगी? DLF एक एफर्ट किया था इसने इस बड़े एवरेज को क्रॉस करने का, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। आपका टेक इस पे? जी वीरेंद्र जी देखिए, ये इनसाइड बार का एक ब्रेकडाउन दिया हुआ है और दिन के लो के ऊपर आकर ये क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। 20 डेमा के नीचे काउंटर फिसल चुका है। मुझे लगता है कि वीकनेस और ज्यादा परसिस्ट हो सकती है। 595 रुपीज तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं इसमें। ओके DLF, इस पर ये व्यू हो गया 608 पर कर रहे कारोबार, लगभग 0.2% नीचे है। हमने F&O ब्रेथ समझ लिया, आज की DLF पे व्यू भी ले लिया। आप अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स पर चर्चा कर लेते हैं। कंचन बताइए अगले हफ्ते कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स होंगे? मंडे के साथ शुरुआत करते हैं। चाइना में यहाँ पे CPI PPI का डेटा आएगा, US में एग्जिस्टिंग हाउस सेल्स का डेटा आएगा, और रिजल्ट में अगर बात करें तो केनरा बैंक, JSW एनर्जी, इंडियन होटल्स और UPL अपने चौथी तिमाही के जो नंबर्स हैं उनको पेश करेंगे। अगर बात करें मंगलवार की तो यहाँ पे जापान में हाउस होल्ड स्पेंडिंग का डेटा आएगा, इंडिया में CPI का डेटा आएगा, और रिजल्ट आएंगे टाटा पावर, BPCL, डॉक्टर एडी टोरेंट पार और डिक्सन टेक्नोलॉजीज के। साथ ही साथ अगर बात करी जाए बुधवार की तो यहाँ पे US में PPI और क्रूड ऑयल की जो इन्वेंट्री है उसका डेटा आएगा। रिजल्ट में एयरटेल का नंबर्स आएंगे, TVS मोटर्स, PFC, सिप्ला, भारतीय हेक्साकॉम, ऑयल इंडिया जैसे कंपनीज अपने नंबर्स को पेश करेंगी। अगर बात करें 14 में यानी कि थर्सडे की तो US में रिटेल सेल्स का डेटा आएगा, इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा आएगा, और रिजल्ट के लिहाज से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, JSW स्टील, टाटा मोटर PV और यूनाइटेड
यूनाइटेड स्पिरिट्स भी अपने चौथी तिमाही के नंबर्स को प्रेजेंट करेगी। फ्राइडे की तरफ बढ़ा जाए तो यहाँ पे यूएस में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आपको आता हुआ दिखाई देगा, जापान में पीपीआई का डेटा आएगा, इंडिया में ट्रेड बैलेंस, फॉरेक्स रिजर्व का डेटा भी इसी दिन आएगा। और रिजल्ट्स के लिहाज से थोड़ा सा ठंडा है, ग्लैंड फार्मा और दीपक नाइट्राइट ही अपनी जो नंबर्स है पेश करेगी। और अगर सैटरडे की बात करें तो यहाँ पे केवल पावर ग्रिड जो है अपने चौथी तिमाही के नंबर्स को प्रेजेंट करेंगी। चलिए कंचन, शुक्रिया आपका। अगले हफ्ते के ट्रिगर्स नंबर्स जो महत्वपूर्ण है वो बताने के लिए। मीनवाइल अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, मात्र 9 मिनट का अंतराल बाकी है। हम जिन जिन स्टॉक्स पे एक अच्छा मूव लेके जा रहे हैं। अच्छा, एक बार एसबीआई लेके आइए। नो एसबीआई में मोस्ट एक्टिव पुट राइटर्स का जो जोन था ना, वो भी शायद फ्यूचर्स में तो अभी तक नहीं, सिंस वो उसको हम कैलकुलेट करते हैं स्पॉट के मुताबिक, याद रखिएगा। बट इन फ्यूचर्स ये 1000 के मतलब रोलिंग में 1000 के लेवल को तोड़ता हुआ, यानी फ्यूचर्स जरा एक बार प्लीज़ मई फ्यूचर्स रखिएगा बगल में, तब आपको एक सेंस मिल पाएगा। ये देखिए फ्यूचर्स तोड़ते हुए, और फ्यूचर्स टेक्निकली याद रखिएगा, टेक्निकली जो 25 मार्च का 30 मार्च का लो था जहाँ पे ये 200 डेमा पे गया था, आपने अपने आप को पैरेलली अलाइन कर लिया। अनुज, बड़ी शॉर्ट लोडिंग जा रही है ना एसबीआई में, करीब 1.5 करोड़, 19%। बिल्कुल। और ये जो मार्केट की रिकवरी फेल हुई ना, वो एसबीआई की वजह से ही हुई। और जिस तरीके से मूव आए, और रिस्क रहेगा मंडे मॉर्निंग को 980 ब्रेक होने का, क्योंकि ये इसका रीसेंट लो था जो वो ब्रेक होने का रिस्क रहेगा बिल्कुल। और अगर ऐसा हुआ तो ये मार्केट के लिए बड़ा नेगेटिव होगा, क्योंकि नहीं 52 वीक लो नहीं, रीसेंट लो, 3 महीने का चार्ट रख दीजिए। जो मार्च के लो थे वो एसबीआई के आई थिंक करीब 980 पर थे मार्च का लो, तो 3 महीने के चार्ट में आपको दिखाई देगा 975 का था वो लो। ऑलमोस्ट वहाँ पर पहुँच गए हैं हम, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है क्लियरली। बिल्कुल एसबीआई अगर आप देखें टुवर्ड्स क्लोज बुरी शेप में। और याद रखिएगा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, देखिए ये रिकवरी आ रही थी, निफ्टी बैंक पे ऑलमोस्ट 55-400 तक गया, बट इसका फेलियर आया बिकॉज ऑफ पीएसयू बैंक, इसका फेलियर आया बिकॉज ऑफ एसबीआई। और एसबीआई 7 अप्रैल 2026 के बाद अब तक की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में, और ऑलमोस्ट इसका 200 डेमा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का अलाइंड है करीब 8228 पे। तो हम उसकी तरफ बढ़ते हुए पीएसयू बैंक, एसबीआई, उसके बाद अगर आप देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इन सभी का आज प्रॉफिट टेकिंग थी। बैंक ऑफ बड़ौदा डेढ़ ऊपर, और एक और जो ब्रांच और एक शाखा जिसे कहते हैं ये वाइट गुड्स की, मैं आपको सुबह पल्स में समझा कि ह्यूज शॉर्ट कैरी हुआ है पूरे के पूरे वाइट गुड्स सेगमेंट में। और आप देखिए किस तरीके से हालात है वोल्टास के और ब्लू स्टार के। वोल्टास 1317 पे डे लो पर, और दोनों में ही कोलैप्सेस हैं, दोनों में ही। आपका व्यू क्या होगा पंकज यहाँ पे, क्या वोल्टास या फिर ब्लू स्टार कहाँ जा रहे हैं, और दोनों के जो शॉर्ट पे अल्टीमेटली टारगेट्स खुल रहे हैं वो कौन से हैं इस वक्त? देखिए, जहाँ तक बात हम वोल्टास की कर रहे हैं, ऊपरी लेवल से कंटिन्यूअसली ये स्टॉक ने लोअर लोस के फॉर्मेशंस दिए हैं। 200 डेमा के नीचे आकर ये काउंटर सेटल हो रहा है, लेकिन आरएसआई जो है वो करीब 20 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक रेजिलियंस मिलना चाहिए, और ऊपर की तरफ वोल्टास देखने मिल सकता है यहाँ पर। बट दूसरा काउंटर जो ब्लू स्टार है, उसके अंदर वीकनेस जो है, मुझे ज्यादा वीकनेस परसिस्ट होती हुई नजर आती है। यहाँ से 2% से 3% की गिरावट ब्लू स्टार के अंदर और भी विटनेस हो सकती है। ब्लू स्टार, वोल्टास, यहाँ पर पेन है, और पिछले कुछ सत्रों से हम इसको कवर कर रहे हैं। चार्ट जीपीटी में भी शुमार किया गया था वीकर साइड पे, 3.5% डाउन है आज के सेशन में भी। कुछ काउंटर्स लेकिन अच्छे इस खराब मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक बार लेकर आइएगा स्क्रीन पर कोटक महिंद्रा बैंक, जो डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ। इनफैक्ट जब मार्केट वीक है, स्पेशली बैंक निफ्टी, कोटक महिंद्रा बैंक में आज देखें तो थोड़ी निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा लॉरस लैब्स रखेगा स्क्रीन पर, और लॉरस लैब्स पिछले एक वीक में तो 8% के रिटर्न दिया ही है, और शानदार रिटर्न्स यहाँ मिले हैं आफ्टर रिजल्ट। 6 महीने में लगभग 23%, 23% का गजब का रिटर्न लॉरस लैब्स ने बना कर दिया है। एक इस पर व्यू लेना चाहूंगी सोमिल जी, लॉरस लैब्स कैसा लग रहा है 1228 के लेवल पर, और जिस तरीके से तेजी एक तरफा में देखने को मिली है, जिन्होंने रैली मिस की, क्या इस लेवल पर वो हाथ लगाने का सोचे?
श्रेया जी नहीं, ये लेवल पे आप हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन जिसकी पोजीशन है वो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, नो डाउट्स अबाउट इट। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, यहाँ से और भी ऊपर के लेवल्स देखे जा सकते हैं। इन द शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म अब यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं जिसकी पोजीशन है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो होल्ड करके रखे, बहुत बढ़िया मूव और भी आगे देखने मिल सकते हैं। अगर किसको री एंट्री करनी है तो मुझे लगता है कि 1150 और 1130 के आसपास फिर से जब थोड़ा सा नीचे आए, एवरेजेस पे टच हो, एवरेजेस पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो, वो एरिया में बाइंग बेटर बनती है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो स्टॉक है ये। बढ़िया पोर्टफोलियो स्टॉक है, लेकिन इन लेवल्स पर अभी थोड़ा अभी अवॉइड करना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि आपका इंतजार खत्म हो गया। इनफैक्ट बस आधा दिन ही है, यस आधा दिन ही है। 9 मई को आपसे मुलाकात करेंगे हैदराबाद में, और भोपाल वडोदरा में सफल कैंप के बाद अब हमारी पूरी टीम निवेश निर्णय की वो 9 मई को पहुंच रही है हैदराबाद, जहां फोकस होगा निवेशकों और ट्रेडर्स से खास मुलाकात और चर्चा का। और अगर आप मार्केट को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को गहराई से समझना चाहते हैं तो निवेश निर्णय सेशन बिल्कुल भी मिस ना करें, खासकर इस मार्केट में जब मार्केट इतना वॉलेटाइल हो और कुछ खास रिटर्न्स ना मिले हो पिछले 2 साल से, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंटरेस्टिंगली सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर तो रहेंगे ही अनु सिंघल सर, जो खुद इस लर्निंग सेशन में शामिल होकर आपके सवालों के जवाब देंगे। सर एक्साइटेड हैं हैदराबाद के लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ हैदराबाद के लिए मैं। शायद कि अब तक जितने भी हमने इवेंट्स किए ना वो सॉर्ट ऑफ नॉर्थ में किए हैं ना, नॉर्थ या फिर वेस्ट सेंट्रल इस जोन में, लार्जली हिंदी स्पीकिंग जोन में किए हैं ना। तो थोड़ा सा हैदराबाद में मज़ा आएगा क्योंकि टुवर्ड्स साउथ ही हमारा पहला कैंप होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत लोग आएंगे क्योंकि साउथ में भी हमारी काफ़ी रीच है, और हैदराबाद में तो खास तौर से, और हैदराबाद में काफ़ी हिंदी भाषी लोग भी हैं, और हैदराबाद में काफ़ी रीच है हमारी। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार फिर से हाउसफुल होगा, और कमल जी होंगे, मनीष जी होंगे, साथ में गुरमीत जी होंगे, और एक डिस्कशन होगी, आपके सवालों के जवाब देने की भी कोशिश होगी। तो अगर आप चाहते हैं हमसे मिलना तो बिल्कुल आइए, ये स्कैन कीजिए QR कोड और रजिस्टर करिए। चॉइस हमारे पार्टनर है, चॉइस के साथ ही हमारा तीसरा इवेंट है। अब तक के दोनों इवेंट्स शानदार रहे हैं और चॉइस भी हमारा काफ़ी बढ़िया पार्टनर रहा है, तो होपफुली ये भी एक शानदार सेशन होने वाला है। राइट सर, शानदार सेशन ही होगा, फिंगर क्रॉस्ड। इवन आई एम एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट। फटाफट से QR कोड स्कैन कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन फ्री है। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और फ्राइडे का सेशन, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सेशन, और सर क्लोजिंग बिग वॉल पर कैसी रही? हाँ, क्लोजिंग थोड़ी सी ख़राब रही। मतलब देखिए, अगर वो 3 बजे वाली जो अपटिक आ रही थी ना, वहाँ पर अगर क्लोजिंग हो जाती तो फिर भी ठीक रहता, लेकिन जिस तरीके से क्लोजिंग हुई है, हम थोड़ा सा डे हाई और डे लो के बीच में बंद हो रहे हैं। बैंक निफ्टी ने आज बहुत परेशान किया, 750 पॉइंट नीचे था बैंक निफ्टी, लेकिन उसको कुछ हद तक निफ्टी IT ने संभाला। 350 पॉइंट ये इस समय ऊपर रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप ने आज फिर आउट परफॉर्म किया। हालांकि मिड कैप नीचे था, लेकिन उतना नहीं जितना मार्केट नीचे था। स्मॉल कैप 1/4% ऊपर था, और एडवांस क्लाइंट देखें तो बहुत ज़्यादा खराब नहीं था। 1350 बढ़ने वाले शेयर, 1750 के करीब गिरने वाले शेयर्स। अब आते हैं आज के सेक्टोरल लूजर्स पर। इसमें सबसे ऊपर आपको दिखाई देंगे बैंकिंग स्टॉक्स, और पूरा का पूरा बैंकिंग और फाइनेंशियल्स वाला पैक। PSU बैंक्स, SBI के नंबर्स के बाद फाइनेंशियल्स और निफ्टी बैंक, इसके अलावा मेटल्स, ऑयल एंड गैस और निफ्टी एनर्जी। गेनर्स में IT सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा। IT के अलावा कैपिटल मार्केट और FMCG में हल्की सी बढ़त थी। निफ्टी लूजर्स में सबसे ऊपर SBI, और क्लियरली एक नंबर के बाद ऑलमोस्ट 8% की गिरावट, 7% की बड़ी गिरावट कोल इंडिया, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, एक्सिस और ONGC में भी थोड़ी सी गिरावट दिखी, लेकिन मेकअप किया टाइटन ने उसका, और टाइटन आज का टॉप गेनर था। निफ्टी का टाइटन था आज वर्चुअली 5% ऊपर। अपोलो हॉस्पिटल्स, एशियन पेंट्स, टाटा कंज्यूमर, अदानी पोर्ट्स और इन्फोसिस यहाँ पर आज थोड़ी सी बढ़त रही, लेकिन एक और हफ्ता समाप्त हुआ, और अब हम अगले हफ्ते के लिए तैयारी करेंगे।